talk about this thing कि attitude कौन. So usually when someone says attitude, ଆମର ଗୋଟେ layman understanding ଅଛି. What is the layman understanding? कि attitude ହଉଛି the way people think or ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ personality trait କୁ ଭାବୁ ଏଇଟା ହଉଛି attitude. Personality trait ମାନେ କଣ? Suppose traits like politeness. Okay. କିଏ ଟିକେ haughty ଅଛି. haughty ମାନେ ଯାହାର ଟିକେ ଯୋଉ କହନ୍ତି ନା ଯୋଉ ଯାହାର ଟିକେ ଖରାପ attitude ଅଛି. Okay. Who is like କି aloof ରହିବା ଯୋଉଟା. ଠିକ ଅଛି. So ସେଇ କେସରେ ଆମେ ସ୍ପେସିଫିକଲି କହୁ କି ଆରେ ୟାଙ୍କର ତ ବହୁତ attitude ଅଛି. କିଏ ଗୋଟେ friendly ଅଛନ୍ତି ତ ସେ କି friendly attitude. So see, these should not be called as attitude. The point of this thing is कि layman understanding of attitude is bit different. Our understanding of attitude should be the attitude or exact माने कौन. For example, let me tell you a very funny story. कि लोक attitude कहले कौन बुझंदी. Maybe ଏ story ଟା ଶୁଣିଦିଅ କି I don't know. Just let me know. This is a real story by the way. मिशेल ओबामा एंड बाराक ओबामा सी प्रेसिडेंट ହେଲା ପରେ ଓବାମା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ସିଏ ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଥରେ ଯାଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଟାଉନ ରେ ବସି ଖାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲେ. ସୋ ସେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଗଲେ ଦେନ୍ ମିଶେଲ ଓବାମା ସି ରେକଗ୍ନାଇଜ ଦି ଓନର ଅଫ ଦ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ. ସେ ଓନର ଟା ସେ ଆସି କଥା ହେଲେ ସେ ଓନର କହିଲେ हेलो मिशेल एंड दे स्टार्टेड टॉकिंग. देन आफ्टर ही लेफ्ट देन बाराक ओबामा आस्क्ड हिज वाइफ कि सी किए. देन ତାଙ୍କ ୱାଇଫ କହିଲେ କି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ଏକ୍ସ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ. तो बाराक ओबामा स्टार्टेड लाफिंग एंड कहले कि देखो तुम यदि तांकु बाहा ହେଇଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ଆଜି ତୁମେ ଏ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଟା ଚଲାଉଥାନ୍ତ और ଏ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ରେ କାମ କରିଥାନ୍ତ. ତ ମିଶେଲ ଓବାମା ହସି କହିଲେ ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ବାହା ହେଇଥାନ୍ତି ସେଇ ଲୋକ ଆଜି ଆମେରିକାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା. ओके. सो दिस इज व्हाट कैन वी कॉल दिस इज कॉल्ड चैंपियन माइंडसेट. ओके. ଆମେ ବହୁତ ସାରା ଯୋଉ डिस्कस कले दिस इज आल्सो एन एस्पेक्ट ऑफ चैंपियन माइंडसेट कि यू वैल्यू योर वर्थ. कि इट्स नॉट लाइक कि ମୁଁ ଯଦି ସେଇ ଲୋକକୁ ବାହା ହେଇଥାନ୍ତି ମୁଁ ବି ତା ଲେଭେଲକୁ ରହିଥାନ୍ତି. ଇଟ୍ସ ମାଇ ପଏଣ୍ଟ ଇज କି ଯଦି ମୁଁ ସେଇ ଲୋକକୁ ବାହା ହେଇଥାନ୍ତି ତାକୁ ମୋ ଲେଭେଲକୁ ମୁଁ ନେଇ ଆଣିଥାନ୍ତି. सो यूजुअली ଲୋକମାନେ attitude କହିଲେ ଏଇ ଟାଇପ ର ଜିନିଷକୁ ବୁଝନ୍ତି. although this is also one layman understanding ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ ଏଟାକୁ attitude କହିବା ଠିକ ନୁହଁ. this is rather a sort of outlook towards life or a sort of temperament, right? But for our own understanding also ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇ ଜିନିଷରେ କହିଲି ଯୋଉ ଆମେ ask ବହୁତ ସାରା discuss କରୁଥିଲୁ. ask ମାନେ କଣ? attitude, skill and knowledge. ମୁଁ କହିଥିଲି କି exam ରେ କଣ knowledge ର ଏତେ ବେଶୀ importance ରହିବନି. ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ବହୁତ ସର୍ଟ ନୋଟିସ ରେ ବହୁତ ସାରା ଡିଫିକଲ୍ଟ ଆନ୍ସର ଲେଖିବାକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ ସେତେବେଳେ ରାଦର ୟୁ ୱିଲ୍ ମୋର ରିଲାଏ ଅନ୍ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ଆଣ୍ଡ ସ୍କିଲ୍. ସୋ ଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସିନାରିଓ ଯୋଉ ଚମ୍ପିୟନ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ସେଇ ୱେରେ ଆମେ ୟୁଜୁଆଲି ଆଟିଟ୍ୟୁଡ କୁ ବୁଝୁ. ବଟ୍ ଦ ଆକ୍ଚୁଆଲ ଡେଫିନେସନ ଅଫ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ଇଜ a bit more different. So actual definition of attitude कौन? And this is the more classic definition. In fact, if you see this entire chapter attitude, this is heavily drawn from psychology. ସବୁ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଏସବୁ ଜିନିଷ ସାଇକୋଲୋଜିରେ ହିଁ ମାନେ ସାଇକୋଲୋଜିରୁ ହିଁ ଚାପ୍ଟରଟା ପୁରା ଆସିଛି. ସିମିଲାରଲି ଇମୋସନାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଅଲସୋ. ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ 30 to 40% of entire your ethics chapter this can be very well answered by through knowledge of psychology. Right? So if you see this some standard definition, this is considered a standard definition. What is the meaning of attitude? Attitudes are learned enduring predispositions to behave consistently either favorably or unfavorably towards objects, events, people or a class of these. Now usually तुम देखते हो मैं सबसे तुमको कि definition टा मैं simple definition रखिया, right? But in this case I would encourage you to practice and remember this definition. The point is कि यदि ए definition टा मन रखियो बार बार practice करके ताले how would a question तुमने short question solve ହେଇଯିବ which is what is the nature or characteristics of attitude. So nature and characteristics of attitude ଯେତେବେଳେ ପଚରା ହବ ସେତେବେଳେ if you remember this definition तो definition ର point ଗୁଡାରୁ ହିଁ ଆମେ ତାର nature ବାହାର କରିଦବା. Right? So let us try to understand कि attitude ର ମାନେ କଣ ଇଏ କଣ କହୁଛି. What is the nature or characteristics? First is that it is a predisposition. You see here attitudes are learned enduring predispositions. Predisposition ମାନେ କଣ? Which predisposes us towards something. Predisposes us ମାନେ ଯୋଉଟାକୁ ଆମକୁ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ tendency create କରାଏ ଆମ ଭିତରେ to behave in certain manner. That is the meaning of predisposition. That increases the likelihood of our behavior. For example, ତମର ଯଦି attitude towards something is hatred, कि ତୁମେ ସେ ଜିନିଷକୁ ବହୁତ hate କର, then it predisposes you, ମାନେ likelihood ବେଶୀ ଅଛି କି ସେ ଜିନିଷଟାକୁ next ତମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ, so you will behave in certain way which is out of hatred, right? Suppose तुमକୁ what do you hate? You suppose you hate milk, okay?
गोटे बहुत बेसिक एग्जांपल होची अबे क्षीर समस्त पियंत बट ता क्षीर ऊपर सरटा को किसी लोगों को भल लागे नहीं सो इट इज लाइकली कौन नेक्स्ट टाइम जदि आमे से लोक को सर आनी के दबु से कौन कहबो so the attitude will predispose the person to behave in certain way we can guess कि this person will reject this thing right predisposition चलो एटा तो बहुत ही लेम डेफिनेशन हला सॉरी एग्जांपल हला let us take another example suppose your attitude towards for example one community suppose Muslims this is you have some negative attitude so you are a very biased person you have a negative attitude towards Muslims so we can guess कि when if you are seeing an Muslim in the माने next time जब तुम्हें कहा को meet करूचो we can guess कि it is likely that you will not behave in a good way towards the person एबे हेई पारे situational factor पे you have to act in a good way situational factor कौन suppose that person turns out to be a police officer now सेई आगरे तुमर कौन तुमर attitude टा दबिजो सताल तुम्हें माने you will act according to the situation but when the situational factors are minimum when it is entirely up to you how you want to behave सता कौन attitude will determine your behavior okay? So in that sense one of the nature of attitude is that it predisposes us simply second important point is that it is learned learned माने आमर एटा innate नुह माने inborn नुह right आमे एटा learn करू ता माने एटा external learned externally आसता है एटा बहुत ही सिंपल जिनस तुम बुझी पारियो कि सपोज आवर फीलिंग्स और एटीट्यूड टुवर्ड्स सम पीपल और समथिंग सम ऑब्जेक्ट्स आमे कोन मा पेटू से की आसछु so एटी somehow through experience we gained that kind of attitude हेई पारे कि suppose your attitude towards certain kind of activity is negative suppose तुम्हारो attitude कोन कि तुमको मंदिर जाओ को पसंद नहीं हेई पारे काहे कि जिनसटा आसिला इनिशियली तुम मतलब मंदिर थोड़ा दूर गलो तुमको हेटी नन्ना माने जो ब्राह्मण माने से तुमको बहुत हैरान कर right because of those a few experiences bad experiences you learned not to trust them right so this is something attitude is something which is learned that means amaro inborn similarly attitude is also enduring माने it is not easily changed तो जते चेंज करियो ट्राई कले भी चेंज हबो सी नॉट इजीली चेंज माने चेंज हबनी नो इनफैक्ट आमे परे भी देखिया बहुत सारा टेक्निक अछि केमती एटीट्यूड को चेंज करा हो बट इजीली चेंज हबनी if you have positive attitude towards reading for example तो सपोज जणे आसी कहे कि नहीं फाटा फाटा पढ़ी किछ लाभ नहीं पिला मन तो आजकल चाकरी पाउना तो इमिडिएटली तुम ता कथा सुनी कि चेंज हबो नहीं एटीट्यूड हेई पारे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जतल तुम निजो को चाकरी मिललानी बहुत वर्ष धरि पाठ फाठ पढ़ा परे भी भलो पाठ पढ़ी कि gradually your attitude would change but immediately it will not change right? Similarly consistent means consistent across different time or situations different situation भी consistent था जे तो माने नुहे ना कि गोटे सिचुएशन हम एटीट्यूड गोटे जिंस पई जदी किछ गोटा अछि पॉजिटिव अछि आउट सिचुएशन में इमीडिएटली नेगेटिव हिजो तो सिचुएशन पई हमर बिहेवियर चेंज ही पारे राइट बट सिचुएशन पई एटीट्यूड इमीडिएटली चेंज होबा नहीं एटीट्यूड चेंज ऑलवेज रिमेंबर एटीट्यूड ता सबले चेंज होबा को गोटे इंटरनल तुमर मोटिवेशन आसिया दरकार इंटरनल कन्विक्शन और मोटिवेशन असले ही एटीट्यूड चेंज हो एक्सटर्नली यू कैन बिहेव इन सर्टेन अदर वे बट एटीट्यूड एक्चुअली चेंज होबा तुम इंटरनली यू हैव टू बी कन्विंस्ड तापर जाई कि तुमरो चेंज हो बिहेवियर similarly it is also either favorable or unfavorable favorable or unfavorable माने हे पर एटा we can have a positive attitude or negative attitude some people also argue कि neutral attitude भी अछि it can also happen you can also write कि favorable unfavorable favorable or neutral but my point is कि जदी तुमे भाबुचो किछ गोटे जिंस पई तुमरो neutral attitude अछि तारो रादर बहुत सिंपल आउटकम और कंक्लूजन होची कि तुमरो से जिंस पई एटीट्यूड ही किछ नाही फॉर एग्जांपल सपोज तुमको पचराला कि तुमरो यूएस रो इलेक्शन आडो को कोन एटीट्यूड अछि यूएस अमेरिकन पॉलिटिक्स प्रति कोन एटीट्यूड अछि तुम कह आगे मु तो यूएस इलेक्शन कोन मु सब फॉलो किछ करेनी मु तो आगे हमर बिहार इलेक्शन कथा सब बळे देख ता माने कोन कैन वी someone will say कि दिस इज a neutral attitude but I think it is better to say कि you don't have any attitude at all माने नाही कि हमें सब जिंस पई हमर किछ गोटे एटीट्यूड दियो किछ जिंस पई हमर किछ एटीट्यूड ही नहीं जो जिंस पई हमें बदड ही नो से जिंस पई हम एटीट्यूड पडो आसी so in general you can say that attitude can be positive or negative and एई वे रे सेत पई भी हमें एटा को डिवाइड कर परिया कि एटीट्यूड रो दुईटा कंपोनेंट अछि गोटा हला बैलेंस गोटा हला इंटेंसिटी बैलेंस माने होची whether it is positive or negative इंटेंसिटी माने हला कि whether it is positive or whether it is negative तारो इंटेंसिटी केते माने तारो लेवल टा केते हे पारे कि किछ जिंस तुम इंटेंसली लाइक करछो किछ जिंस लेस लाइक करछो
हे पारे किसी जिंस तुम इंटेंसली डिसलाइक करछो किसी को माइल्डली डिसलाइक करछो बट इट कैन वेरी और नॉट कैन डेफिनेटली वेरी हमें एमती किसी खाइबा पसंद अछि ओके तुमको देखो तुमको वेज भी पसंद पनीर भी पसंद अछि मटन भी पसंद अछि तो एटीट्यूड टुवर्ड्स बोथ आर पॉजिटिव बट मटन को तुम बेसी प्रेफर करो तो एका संगे दुईटा ऑप्शन तुमको दिया तुम मटन खाइ so that means the intensity of this attitude is more towards on a mutton case रे बेसी and the last characteristic is that attitude is always towards by an attitude holder towards an attitude object ऑब्जेक्ट एठी सेही मीनिंग रे नाही कि केवल ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कैन आल्सो बी ए पर्सन पॉइंट होच कि किछि गोटे जिंस प्रति हमर एटीट्यूड अछि ओके सो दैट मीन्स देयर इज ए डायरेक्शनल गोटे डायरेक्शन गोटे अछि similarly this object would also have some kind of might have ए लोकोडा this object is a person now तार जदि आउ कहा प्रति कोन एटीट्यूड अछि now in that case that person will become the attitude holder and the other person will become the attitude object right so आमे जो जहा कंटेक्स्ट रे डिस्कस करूचे सेही लोक को आमे कहया एटीट्यूड होल्डर ए टर्म टा पछरे में बहुत बार यूज करे एटीट्यूड होल्डर एएच एनी डाउट सो फार definition of attitude and characteristics of attitude किसी बुझी होछि ना किसी डिफिकल्टी होछि कि गिव मी सम फीडबैक आई एम अनेबल टू नो सर बुझी बुझी होछि होची सर सर बुझी होछि वेरी गुड भलो लागुछि कि सर नाही को ଭଲ ଲାଗୁଛି इंटरेस्टिंग लागुछि तो ओके यस सर यस ठीक सर अछि माने गप भलिया ही सुनो हला पूरा एक्चुअली देखिया गले पूरा टॉपिक टा ही गप बट आमे जबरदस्ती कोन करे हेते किछि टेक्निकल टर्म्स आमे बाहर करछु आमे माने मु बाहर करनी साइकोलॉजिस्ट माने बाहर करछु बट व्हेन यू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली जिंसर मीनिंग कोन सेतल तुमे भाबियो कि यार एटा तो गोटे जेनरिक जिंस जोटा कि तुमे ऑलरेडी जानिथिलो बट से माने ताको खाली गोटे टेक्निकल टर्म दे दिछ राइट तुमर एटीट्यूड अछि बोली तुमे जानिछो बट ताको से टर्म दे देले एटीट्यूड होल्डर सो डोंट गेट इंटिमिडेटेड बाय दीस टर्म्स ए टर्म्स गुडा बहुत सिंपल जिंस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि द अंडरलाइंग मीनिंग कोन मीनिंग टा बुझियले जिंसटा इजी हिजो यस यू आर आस्किंग समथिंग एल्स सर बिहेवियर एटीट्यूड भितर डिफरेंस कोन आसीबो ताले तो मतलब सर एटीट्यूड भितर बिहेवियर आछी अरे बाप रे तुम बहुत ही माने इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड दिस बाय दिस पॉइंट यू हैव टू एड्रेस दिस इमीडिएटली attitude और behavior ଭିतर try to understand attitude is something which is in the mind of the person okay so this is internal attitude टा काहा को immediately देखा जाउना behavior होचे हमर action this is external for example and एई जिंस विषय हमें परे आसिया कि attitude behavior ଭିतर लिंक टा अछि कि नै एंड अछि यदि सेटा केते स्ट्रांग इज इट स्ट्रांग और नॉट एटा भी यार भी परे हमें डिस्कस करिया बहुत सारा लैपियर रो स्टडी देखिया से डिफ्लर एंड वेस्टी रो स्टडी देखिया but you have to understand this immediately otherwise entire chapter point कौन attitude टा हम माइंड रे अछि बर्तन कथा होची immediately तुमरो कौन attitude अछि काहा प्रति आमे immediately तो मुह देखि के तो जानि परिबो तुमरो एक्शन थ्रू रे आमे ताकू गॉज करी अदरवाइज तुमको जे पचरा हला तुम सତରେ ट्रुथफुली सब कहि देला कि यस मु तो एटा खराब एटीट्यूड मोर एम जाय ताल तो अलग था बट अदरवाइज इट इज इंटरनल वी कैन नॉट सी इट so it is something which is in our mind and behavior is something which others can see so it is also sometimes known as overt this is overt this is covert means এটা কভার ହେଇକି ଅଛି এটা openly it is visible ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହଉଛି attitude in most cases will manifest in behavior but not in ମାନେ ସବୁବେଳେ ହବନି ବର୍ତ୍ତମାନ try to understand କି behavior ର କଣ କଣ component ଅଛି behavior କେମିତି ଆସେ ଗୋଟେ factor important factor ହଉଛି attitude and attitude if you see this is a subset of many other internal factors how we बहुत सारे internal factors for example in general what is your level of motivation is a different thing what is your intelligence okay what is your other decision making ability ए सब गुडा हम माइंड रे अछि राइट सो ए गुडा सब इंटरनल फैक्टर्स आउ किछि अछि एक्सटर्नल फैक्टर कोन जो गुडा सपोज हम सोसाइटी रे कोन चलछि से सिचुएशन टा कोन अछि को जगह रे तमे अछो ए दुइटार मिक्स हे कि बाहरियो आउटकम नाउ समटाइम्स इट विल हैपन कि तुमरो इंटरनल फैक्टर गुडा ओवर पावर कर जो इन द सेंस कि यू विल थिंक कि मु मोर इंटरनल जिंस पई ही मु डिसीजन ने आउ बेले बेले कोन हो एक्सटर्नल फैक्टर पे तो डिसीजन टा सॉरी तुम बिहेवियर टा बाहरियो यार आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल सपोज तुम्हारा इंटरनल फैक्टर और एटीट्यूड और मोटिवेशन होती कि यू आर ए फन लविंग गाय ठीक है दिस इज योर एटीट्यूड तो फन लविंग माने तुमको सपोज कार रेस करे बहुत भल लागे तो इन जनरल दिस विल रिफ्लेक्ट इन व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर कि तुम स्पीड फास्ट ड्राइविंग करियो स्पीडी ड्राइव राइट पर सपोज तुम्हें जो जगह जाओ तो सपोज एटी गोटे पुलिस गाड़ी अछि
ଏବେ ତୁମେ ଇମିडिएटली ब्रेक मार दो कि नहीं, ଏବେ ଦେଖ ତୁମ बिहेवियर चेंज ହେଇଗଲା, but was that behavior due to your attitude? That was not because of any internal factor, this was because of an external factor. External factor किए पुलिस, अब पुलिस अच्छी चालान काटिदବ, so behavior change ହେଇଗଲା. Think of another thing, suppose you are a सपोज तुम गोटे बहुत अनएथिकल पर्सन, सपोज तुम गोटे बहुत खराब पर्सन, ओके, तुम बहुत लोक गाली दियो कौन कर, तुम जाइछ क्या गोटे पुओ देखा कि झील देखा जाइछ क्या, बर्तमान सेठी कौन से सेम बिहेवियर देखियो कि सेठी तो तुम गोटे नाइस फेस तुम प्रेजेंट करियो ना कि मु तो बहुत ही नाइस गाय नाइस कर, राइट. नाउ आई कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड इंटरनल फैक्टर अलग था किंतु एक्सटर्नल फैक्टर टा ओवर पावर करियला इन द सेंस कि यू अंडरस्टूड कि मते एबे एक्सटर्नल फैक्टर वे रे बिहेव करियार अछि बिकॉज़ दिस इज इन माय इंटरेस्ट आल्सो. So internal factor और external factor का difference. So attitude होची something which is internal and behavior is something which is external. कथा होची कि आमे काहे की attitude पढुचे because we expect that by understanding what is a person's attitude we can predict कि what that person is going to do and accordingly we can control. ये सब जिनस आमे पछरे भी देखिया गोटे टॉपिक छोटा टॉपिक रे अंडर रे अछि कि how strong is the attitude behavior link. This is not a small difference, this is a big difference. Attitude and behavior. Okay. Now come to this part कि components of attitude कौन. सो आम सब देख साइकोलोजी सब डिस्कस करा जाए किसी भी जिनसर साइकोलॉजिकल कंपोनेंट तुम यदि बाहर करियो तीनटा जिनस बाहर ए बी सी, अफेक्टिव, बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव. हम ये बार बार बहुत जगह डिस्कस करछु. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अफेक्टिव? अफेक्टिव माने होची इमोशन और फीलिंग्स. कॉग्निटिव माने होची थिंकिंग, जहाँ तुम अगेन देखो एटा भी माइंड रे अछि एटा भी माइंड रे अछि, ए दुइटा मिसी की तार आउटकम होची बिहेवियरल एक्शन प्लस आउ बाहर किसी ए दुटा जिनस होची इंटरनल प्लस बाहर किसी एक्सटर्नल फैक्टर भी आछी. सो एवरीथिंग इफ यू साइकोलॉजिकली एनालिसिस करियो सब जिनस एबीसी तीनटा जिनस ही बाहरियो अफेक्टिव, बिहेवियरल, कॉग्निटिव. तो ये तीनटा को जिनस होची से पर्सन रो एक्सटर्नल जिनस गुडा होची से पर्सन रो नो, एडा होची एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट एठी ए वे रे यूज कराइ छी एक्सटर्नल जिनस से पर्सन रो एक्शन और बिहेवियर, पर्सन रो थिंकिंग, पर्सन रो इमोशन और फीलिंग. So similarly, attitude will also have three components. What होची attitude रो emotion और feeling, attitude related emotion और feeling. Similarly, attitude related thinking, सेटा हला तार attitude रो cognitive part. How attitude जेतले behavior रे turn हिजे सेटा that we call it the action component or behavioral component of attitude. Okay. Again, try to understand attitude or behavior. These are different things, right? These are not the same thing. But attitude पाई हमारा certain behavior बाहर, and that component will be called as behavioral component of attitude. So I have taken this example कि suppose we are trying to understand कि attitude towards cows. Suppose जनकर attitude towards cows होची positive, गाय गाय को प्रति तार attitude positive अछि, ताले तार आमे केमते एनालिसिस करिया कि तार अफेक्टिव, कॉग्निटिव और बिहेवियरल कंपोनेंट कोन हो. तो अफेक्टिव और इमोशनल कंपोनेंट हो कि गाय को देखले तो खुशी लागे, पॉजिटिव इमोशंस आसीयो, काइंडनेस माने ता भीतर काइंड फीलिंग ता आसीयो. कॉग्निटिव कंपोनेंट देखो एगुडा सब ऑल इमोशन रिलेटेड थिंग कि न, इमोशन और अफेक्टिव थिंग. कॉग्निटिव जिंस कोन हो, थिंकिंग जिंस कोन हो, तो माइंड को तार जिंस आसीयो कि गो माता, राइट. रिलीजियस सिग्निफिकेंस यार अछि, तार बेनिफिट कोन दोची. सपोज ए बेनिफिट विषय भाबी कि यार से हमको क्षीर दउची, से किछ लोग एटा बिलीव करछन कि गाय होची ऑक्सीजन सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करके ऑक्सीजन दउची, although they don't believe in such kind of thing, but point is many people think that, and also it is also many things are also true कि गाय होची हम इकोनॉमी को, हम लाइफ को, हम सोसाइटी को बहुत जिनसे कंट्रीब्यूट करूची. सो सेही सब थॉट्स जेतल मुंडो को आसला, से थॉट्स गुडा को पार्ट हे जो दोज आर कॉग्निटिव पार्ट्स, ओके, और थिंकिंग पार्ट्स ऑफ द एटीट्यूड. नाउ ए दुटा जिनस मिसी तुम बिहेवियर रे कोन रिफ्लेक्ट हबो जेतल, तो ए सब जिनस पई इट विल गेट रिफ्लेक्टेड इन योर बिहेवियर. जेतल गाय गोटे आसे तुम ताको फीड करियो, खाया को दबो, पेटिंग करियो, पेटिंग करन देलो करियो, प्रोटेक्ट करियो, किछि असुविधा हल ताको प्रोटेक्ट. फॉर एग्जांपल तार देह खराब हेला, टेक इट टू द हॉस्पिटल. So this is how I have through an example I have tried to explain कि गोटे attitude रो केमते different component अछि. You can take any number of other attitude. You can for example say कि attitude towards certain community. तो certain community towards तुम्हारा attitude positive और negative जहाँ भी हो, ताको we can also divide it into affective, behavioral and cognitive. कि सेही community विषय कथा आसिले तुमरो feeling कोन आसे, से community towards that community तुमे behave केमतिया करो, और से community टॉपिक उठले तुमरो माइंड को थॉट्स कोन कोन आसे.
So these would be affective behavioral and cognitive components. Okay. Any doubts in this? Components of attitude. Then now come to this part, functions of attitude. Okay. Try to understand या माने कौन. By the way, कार मन अच्छे आम गोटे कथा मालिनोस्की. किए मालिनोस्की थिले, कैन एनीवन टेल मी? They're anthropologist. ओके, से कौन आइडिया देथिले? यू रिमेंबर? Okay, like I think social sanction. ସେମାନେ ଗୋଟେ festival କୁ ଯାଉଥିଲେ, those who are criminals but they are not allowed to go to that function. Very good. So function of culture, how this is in their case, how that was regulating society. Okay, so এটা কোন religion mu likhe sorry, regulation of society, right? So that means in general ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ କି ଆମ ପାଇଁ culture ଟା କଣ, usually ଆମ ପାଇଁ culture ଟା which something that we enjoy, but some other people might have some practical use. तो ସେ practical use को ଆମେ କହୁଛୁ function. ସେମିତି attitude କୁ ତମେ କେବଳ ଭାବନି କି it is something which is just there, sometimes it also has many uses. तो ଆମେ ଦେଖିବା कि attitude ର କଣ କଣ use ଅଛି. So the question either asla ki what are the uses of attitude or what are the functions of attitude, these are the same points. Okay, majorly charita function achi. You can remember this as bank: value expressive, ego defensive, need and knowledge. Value expressive function, ego defensive function, need function and knowledge function. ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି କଣ. And with that I have added this point also कि जदि गोटे टाइप रो एटीट्यूड यांक भितर जेकोसी गोटे रीजन पई और फंक्शन पई अछि, ताले ताको हमें केमितिया चेंज कर परिया, हाउ कैन वी चेंज दैट. So we will see ki what are the different functions of attitude and depending on their function how we can change them. But then अच्छा, by the way कहीं कहि परिया कहीं हमें कहूची चेंज परिया, because point is कि बेले बेले बहुत सारा जो एटीट्यूड लोक माने एटीट्यूड होल्डर रो जो एटीट्यूड अछि ना, those might be undesirable for us. So we will try to convert that into some kind of desirable attitude. For example, suppose this person's attitude होची anti social attitude, ताको हमें pro social attitude रे करदा. Suppose there is a criminal अछि, जदि हमें तार attitude somehow if we are able to change it to pro social attitude, then that person will no longer be a criminal. So बहुत सारा practical application अछि. हमें यदि लोकंकर lack of civic sense, इंडिया रे in general देखि जो लोकंकर किछि भी ଗୋଟେ civic sense बहुत ही कमଥାଏ, ठीक अछि. किछि लाइन फाइन किछि मानिबेनी, लाइन रे सब लंबा लाइन लोक छिडा हिचंती, पछरु आसी जण सामने छिडा हेना. So if somehow we are able to change their attitude, so we will now make them better citizens. So this is the need for which we want to change their attitude. So आम देखिए कि different function, first कथा है attitude रो कौन काम आम ପାଇଁ अछि, and depending on what is their function, how we can change them towards a better attitude. So the first and foremost function is value expressive function. So from the name itself we can understand कि जेतले attitude किछि गोटे value को express करछि. Okay. जेतले attitude गोटे simple value, आमे previous class रे value विषय रे पढछि, there are different types of values: intrinsic values, instrumental values, core values, cardinal values. Right? Specifically सेही value को express टा करियो which are the salient or cardinal values. So value expressive function of attitude होछि सेही type रो attitude जोटा सेही लोकर किछि cardinal values माने central values को express करतो. Now try to understand यार माने कोन. You think of one example, suppose Mother Teresa. What is her attitude? Tankar attitude suppose जोटा सेवा ही धर्म सेही type रो attitude, right? Her attitude was something which is welfareism or charity. Okay. चलो एठी मु synonymously attitude और value को synonymously use करछि. Now you can understand कि एई value गुडा तांको attitude value expressive attitude तांकर कोन हो जोटा एई value को express करतो, right? So she will act in the such kind of way which will maximize these kind of values. So in other words, people माने सब लोकंकर किछि ना किछि, maximum लोकंकर किछि ना किछि ओटा cardinal or central value थाए. Accordingly that will also shape their some of their attitudes. And हमें सही attitude मानू कहया कि सही attitude मानकर function कोन, that is the value expressive function. Now एथरे गोटे जिंस नोटिस करो कि गोटे लोकर different objects and different events ପାଇଁ different attitude ଅଛି. Suppose this is attitude 1 towards one type of thing, this is attitude 2 towards another type of thing. But हमें सब attitude को consider करने, हमें सेटा को consider करछे which is central to the person.
तो सेही एटीट्यूड गुडा को हम कहूँ वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन। फॉर एग्जांपल हे पारे कि हम मदर टेरेसा को जाई पचारे कि आज्ञा फुटबॉल प्रति आपनकर कोन एटीट्यूड अछि, फुटबॉल ठीक अछि मते पसंद अछि बट मु फुटबॉल खेले नहीं कहीं मोर पर्पस होची सेवा करिया, राइट। So we can say कि towards football Mother Teresa's attitude is also positive. But again, if we talk about what is her value expressive function, that is that attitude which is expressing her core values, and that value is seva, or that is welfare or charity. And what will be those values? Those values are, for example, sorry, those attitudes will be the attitude towards the oppressed, attitude towards leprosy patients, attitude towards the poor. Now, she is more concerned about these things. She is not concerned about football. So football or other, other things, those are less relevant for her. तो सही एटीट्यूड हबनी वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द सेंट्रल फंक्शंस। नाउ आमे ए एटीट्यूड गुडा को केमिति चेंज करिया? टू चेंज, रिमेंबर दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट एटीट्यूड टू चेंज, मोस्ट डिफिकल्ट, बिकॉज एटा होचे से लोकर सेंट्रल और साइलेंट और कार्डिनल वैल्यूज को जोटा एक्सप्रेस करछ। बट स्टिल दिस कैन बी चेंज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम if you show to the attitude holder of the inadequacy of the current attitude and how a new attitude can better define him or express his core values। माने आमे एबे सपोज मदर टेरेसा को जाई कहया कि आज्ञा देखंतु जमाना बदली जाईची, एबे लेप्रोसी पेशेंट मानकर सेवा करी किछि फायदा नाही, एबे हमर नुआ पोप कहिसंती कि जो माने फुटबॉल खेलिबे से माने हेवन को जिवे। आई एम गिविंग a ridiculous example, but I am telling you how difficult it is to change one person's value expressive function kind of attitude। so सेठी तुमको कोन करिया पड़ियो, सेंट्रल और कोर वैल्यू को चेंज करिया पे यू हैव टू कन्विंस द पर्सन कि तांकर जो एक्जिस्टिंग एटीट्यूड अछि सेटा समहाउ इनएडिक्वेट अछि, ओके, एंड गोटे नुआ एटीट्यूड आनले दैट कैन बी बेटर। सपोज इन अदर वे यू कैन एक्सप्रेस दिस कि इंस्टेड ऑफ सर्विंग द पोर, आमे यदि पोर मानक पई फुटबॉल मैच ऑर्गेनाइज करिया सेतरु मे बी किछि मनी आसबो ता थ्रू वी कैन सर्व देम, समथिंग लाइक दैट, ओके। So you have to replace the existing attitude with another attitude, otherwise that person will not accept your suggestions, right? So therefore you can understand why this is most difficult, because this is something which is aligned values or cardinal values related। And if you give more examples of how, देखो examples कौन देबा हमें cardinal value कहा कहबे, you take of any historical persons, हिटलर देखिया तार cardinal value थला मेगालोमानिया, माने पावर हंग्री। if you similarly think of, okay, one person Don Juan, तांकर cardinal value कहा जाए lust, okay, is very famous for माने flirty kind of guy। Similarly, if you talk of another person like, for example, Napoleon, again Napoleon was also power hungry, control, right? So these are all cardinal values, single values। Now if you want to change the value of this person, it is very difficult। Now come to this part, ego defensive functions। Second function of attitude is ego defensive। Now yeah माने कौन? Before that we have to understand what is the meaning of ego defenses। I have told you कि ये सब पूरा chapter टा ही बहुत heavily draw करिछि psychology रो। So if you know one of the major proponents of psychological theory, usually psychology कहले भी लोगों को माइंड को सिगमंड फ्रॉइड रो ना आसे। So सिगमंड फ्रॉइड करो theory रो ए आइडिया टा आसे ego defenses। So what Sigmund Freud said कि human mind, this entire thing is the human mind। से human mind को इमती classify करो। By the way, I will tell you another thing also. Don't blindly believe anything that Sigmund Freud is saying। In fact, around 90% of ideas of Sigmund Freud right now, it is discarded। We do not believe in anymore। But these theories were useful for us। One thing is truth, another thing is useful। Many of his theories were useful for us to understand human behavior। So that is why his theories are still being used, right? So Freud कहले कि human mind रो तीनटा लेवल अछि। गोटे होची कॉन्शियस लेवल, गोटे होची प्री कॉन्शियस लेवल, गोटे होची अनकॉन्शियस लेवल। कॉन्शियस लेवल कौन? कॉन्शियस लेवल माने हमर वेकिंग कंडीशन ने एंड आमे जोटा को क्लियरली जानि परछे कि थॉट गुडा और फीलिंग, ए थॉट फीलिंग परसेप्शन ए सब जिनसा हम माइंड रे अछि, दोज आर कॉन्शियस माइंड। फॉर एग्जांपल सपोज राइट नाउ यू आर क्वाइट अवेयर दैट तुम गोटे क्लास रे बसि जाओ, क्लास रे सुनुचो किछि पाठ पढुचो, you also have certain kind of maybe attitude towards the subject itself। So all of these are conscious that you are aware of। Then there are some pre-conscious things that you are not completely aware of at the moment, but ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବ you can recall it, right? So these are memory, for example, these are memory stored
and the knowledge stored in your mind. So right now तुमको यदि immediately कहा हब कि तुम मने पकाओ आ कहो कि आम कंट्री रो सब स्टेट्स मान को ना कहो, नेम ऑल स्टेट्स, so you can recall them, but you are not thinking about all of these things right now. So these are all in your pre-conscious mind. Then most interesting part is this part, unconscious. If you see actually diagram टा ठीक से correctly कराएं, see जो iceberg theory देले से diagram रे एमतिया थे. Okay. He said कि this part is the only the conscious level, conscious mind. This is the pre-conscious mind, and this entire 90% around is the unconscious mind. So Freud का theory थी कि major part of our mind is in the unconscious. Unconscious होची सेही part of our mind जहाँ को हमें easily access करी पारू नहीं. Say feelings, thoughts, desires, they are all in our unconscious mind, but we are unable to access them. ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହଉଛି ସେ unconscious mind ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣୁଛୁ କେମିତି? ଫ୍ରଏଡ୍ କହିଲେ କି ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଆମେ ସେତେବେଳେ ଜାଣୁଛୁ, ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଯୋଉଟା ଡ୍ରିମ ରେ ଆମର ଆସୁଛି, ତ ଫ୍ରଏଡ୍ କହିଲେ କି ଆମେ ଯେତେବେଳେ କନସିୟସ୍ ଥାଉ ନା, ଆମେ ଏଇଠୁ ତଳୁ ଉପରକୁ ଆସିବାର ବାଟ ସବୁ ବନ୍ଦ ଥାଏ। ଓକେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୋଇ ପଡୁ ସେ ବାଟ ଗୁଡା କିଛି କିଛି ଏସ୍କେପ ରୁଟ୍ ତିଆରି ହେଇଯାଏ। ସୋ ନାଉ ଦିସ୍ ଅନକନସିୟସ୍ ଲେଭେଲରୁ ଆମର ଡିପେଷ୍ଟ ଡିଜାୟାର୍ସ, ଓକେ, ଫିଲିଙ୍ଗସ୍, ଥଟ୍ସ, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପରକୁ ଆସିବ। So this is one example. आउरी बहुत सारा different way रे you can express your unconscious feelings. For example, there is something which is known as Freudian slip. माने कथा को गोटे word कहया जगह तुम्हें आउ गोटे word कहि दो which is maybe what you actually meant. So Freud कहले कि this is also another example through which we can access the unconscious माने mind रो कोन content अछि. But most importantly, unconscious रे सेही सब thoughts, desires and feelings अछि which are unacceptable. This is the most important part to understand. Unacceptable माने जो गुड़ा किसी dark type of desire. Suppose you have a deep hatred towards one of your friends. Friend तो ना ऊपर चलो pretend करछो, but you want कि अरे याको तो देखला माने मोर हाड़ जळुछि. So हेई पारे तुम unconscious mind रे desire टा थाई पारे कि तुमे ताको मर्डर कर दियो. तो एटा हमें केमती जानिया बेले बेले कोन गोटे ड्रीम रे तो देखियो कि तुम एक्चुअली ताको मर्डर कर दोछ. At least this is what Freud is saying. तो फ्रॉइड कहले कि सपोज फ्रॉइड पाखु जन लोक आसी कहले आज्ञा मु तो देखली मो सांग को मर्डर कर दू. तो फ्रॉइड कहे तुम पक्का से एक्चुअली चाहो ताको मारिया, सेति में तुम ड्रीम रे देखला तो नाही आज्ञा मु तो सांग को मोर बहुत भल पाए. देन ताको फ्रॉइड somehow he will be able to convince him कि नाही तुम तो चाहो ताको मारिया. So this is an example कि there are many unacceptable thoughts and desires which are in the unconscious mind. Now why are we reading about this? Point is कि many a times ये जो unacceptable desires and thoughts थाए सेटा बेले बेले कोन हठात ऊपर को बाहरी आसे. ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ବାହାରି ଆସେ this makes the person uncomfortable, that creates anxiety in the person. ତ ଏଇ ଯୋଉ uncomfortableness और anxiety ହେଲା, suppose ସେ ଲୋକକୁ confront କରାହେଲା କି ଭାଇ ତୁମେ ତ ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ତୁମ ସାଙ୍ଗକୁ ମାରିଦବ. Now to prevent this kind of uncomfortable or anxiety inducing event or experience, the person has something which is known as ego defense mechanism or EDM. So ego defense mechanism होची सेम mechanism जोटा कि इराको prevent करे. Now there are different types of EDMs also. हमें एते डिटेल जीवा दरकार नहीं, but it is in this PDF. You can go through this and पढ़ियो, बहुत ही interesting. It is really really interesting topic. But point is we don't need to go into detail. So ego defensive mechanism होची सेही भलिया जिंस ओटे uncomfortable or anxiety producing thoughts, feelings, desire को suppress करके रखे. So गोटे टाइप रो एटीट्यूड रो फंक्शन होची सेमितिया काम ईगो डिफेंसिव, माने से हमको प्रोटेक्ट करियो कि आमर अनकॉन्शियस माइंड रो जो डिजायर विजार थियो से गुडा को ऊपर को आसिया को से हमको प्रोटेक्ट करियो. So these are attitudes which protect people from deep internal conflicts or unacceptable desires or hurtful memories. So I'll give you another example. गोटे गोटे फेमस एग्जांपल अछि. गोटे छोटो पिलाटी से कोन हला कि दिने से बहुत एमती भयानक ड्रीम्स देखिला, तो देखिए बहुत डरिगला. से आसी कहला कि तार जेजाबापा को आसी कहला कि मु एमती देखुची कि मु आमे गोटे पहाड़ को जाइछु, मु तबु ऊपर ठेली दउछ तळ आ से ड्रीम टा मोर बार बार रिपीट होछ. सो ही वाज वेरी वरीड. तो से ग्रांडफादर कोन कले ताको नेकी फ्रॉइड को पाखु गले. तो फ्रॉइड ता डिटेल ले बहुत सारा जिंस पिलाटा को पचारले. देन ही आइडेंटिफाइड वन इंसिडेंट जोटा से नारेट कर से ताको आइडेंटिफाई कले. व्हाट हैड हैपेंड वाज दैट दिने कौन है से चाइल्ड ता जेजेबापा संगे कथा हो से पचारला कि जेजे तुमर तो एते सारा प्रॉपर्टी अछि, एते सारा जिंस अछि, तुमर ए बंकुली बाड़ी अछि, चश्मा अछि, तो तुमे मरि गला पर एटा का दो. तो जेजे कहले मरि गला पर तू नउछु.
तो पिला खुशी है कहला अच्छा हो ताले मु वेट करूची तो मे बी फ्रॉइड अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड सो दैट थॉट that went and worked its way through the unconscious mind of the child and that reflected in this incident कि से ताको ठेल दूची जोड़ा से एक्चुअली करी पारि न था बट तार फीलिंग थिला सेटा को से ड्रीम रे देखला कि ड्रीम रे ताको से जिनसटा फुलफिल हे यूज राइट सो यू कैन अंडरस्टैंड कि इन एनी केस लेट मी मु बार बार तुमको एथपे कथा कहूची कि फ्रॉइड कर 90% थियरी राइट नाउ इट इज डिस्कार्डेड ओके वी डोंट बिलीव इन एनी ऑफ दिस थिंग्स बिकॉज़ परे आमे रियलाइज कलु कि इसु जिनसर एविडेंस किछि नाही but in any case from that theory these all functions are also derived ego defensive function ame ethru derive करछु these are attitudes which protect people from deep internal conflicts आता माने कोन suppose एई सेम केस रे what will be the attitude of this person suppose गोटे कोन होची चाइल्ड को एमती एंजाइटी इंड्यूसिंग थॉट्स आछी कि से त जेजे बापू मारि दोची तो एठी रिप्रेसिव काइंड ऑफ एटीट्यूड काम करियो सो एठी गोटे तार एटीट्यूड एमती डेवलप हबो कि से रियलिटी को आउ फेस करिवो नाही so real जिनस को से रिप्रेस कर दो ता माइंड रे so that is why also Gordon Alport बोली जने साइकोलॉजिस्ट थे he had said this thing कि attitudes are psychological crutches for those crippled in the encounters of life तो बहुत बड़ बड़ कथा कहआ होची यार माने कोन बहुत सिंपली कहूची तुमे देखि दियो किछि लोक कोन होतनी बहुत रूड थिबे राइट बहुत फालतू वे रे कथा होतबे तो सपोज तांको संगे जाई कि तुम बहुत भलो से बसे दिने कथा हो तांको पचरे कि बाबू जे आपण काहे के ते रूडली कथा होनी ताले इट इज पॉसिबल दैट सम ऑफ देम विल से कि एक्चुअली आगुरु तो आमे भलो थिलु आमे भलो वे रे कथा होतु आम लाइफ रे एमती किछि एक्सपीरियंस आसिला जोटा को कि जोटा आमे माने लोकंकर खराब साइड टाको देखिलु तापर आमे भी रियलाइज कलु कि नहीं हमको रूड हबार अछि आमे भी लोकन साथे खराब बिहेव करी बिकॉज़ आगुरु आमे तांको द्वारा बहुत हर्ट हे so this is the meaning of जो attitude टा परे तांको भितर डेवलप हला this was because of they were crippled in the encounters of life माने लाइफ रो एनकाउंटर रे तांको क्रिपल कर देला लाइफ रो किछि खराब एक्सपीरियंस आसला जहा द्वारा तांकर से टिपिकल एटीट्यूड टा डेवलप हला so these kind of negative attitudes are known as ego defensive functions तो से एटीट्यूड रो काम होची तुमको अब फर्दर हर्ट करिया रे अटकेयो सपोज तुम के चीट करके चली गला तापर तुम कोन कहयो नहीं मु ता को ऊपर विश्वास करिवि नाही so this kind of distrust or mistrust जो डेवलप हला this is also an ego defensive function तुम एटीट्यूड तो यार सॉल्यूशन कौन हम सब देखछे कि से एटीट्यूड को चेंज केमते करिया यार सॉल्यूशन होची साइकोथेरेपी माने होची से बडा थेरेपी जोटा साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल बेस रे किसी गोटा काम करी फॉर एग्जांपल यू विल क्रिएट ए साइकोलॉजिस्ट विल क्रिएट ए रैपो और ट्रस्ट विद द एटीट्यूड होल्डर व्हिच इज द पर्सन किसी प्रथम ट्रस्ट प्रथम बिल्डअप कर सब थेरेपी रे प्रथम ट्रस्ट बिल्डअप करा देन ही विल क्रिएट ए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट टू चेंज द एटीट्यूड then through the conducive environment you will help the person to gain insight into the inner conflicts यानी से लोको को ही से रियलाइज करिया को दिया हबो कि मोर ए सो एटीट्यूड टा काहे की अछि मोर प्रॉब्लम टा काहे की होछि सपोज ए जो रूड पर्सन थिला ताको हमें साइकोथेरेपी करी ताको बुझेयु कि बाबू तुमरो खराब एटीट्यूड हवार रीजन होछि तुम आगर पास्ट खराब एक्सपीरियंस थिला सेथि पे एंड नॉट बिकॉज़ दैट यू आर अ बैड पर्सन then we'll make him or her realize कि now if you want you can change your attitude and you can also be a good person ଭଲ behave କରିପାରିବ ଅନ୍ୟ so ତା ଦ୍ୱାରା ତାର ଗୋଟେ insight develop ହବ କି ମୁଁ କାହିଁକି ଏଇ କାମଟା କରୁଥିଲି ଯେତେବେଳେ ସେ insight ଟା develop ହବ ସେତେବେଳେ ସେ problem ଟା solve ହେଇଯିବ so based on the realization then insight basis he or she will change the attitude okay. Any doubts in this देखो एटा ही सबटू complicated part of attitude chapter ଏଠି ମୁଁ ସବୁ ଦେଇଛି ego defensive mechanism ଦେଇଛି if you want at home at leisure you study through it बड़ा बड़ा सब ego defensive mechanism ଅଛି तार examples भी देखियो सब ଅଛି repression denial projection displacement regression sublimation very interesting stuff but we are not going to discuss in detail दरकार नहीं जे attitude आम ethics ପାଇଁ दरकार नहीं now the third important or function main function of attitude is something which is need function need function माने किछि attitude जोटा हमर need को meet करछन that is it is they are helping us to achieve some goal or adjust better to life okay? किछि भी certain need को हमर fulfill करछन for example need कोन suppose you are a public servant so initially तुम एबे preparation करछो suppose तुम extrovert total न suppose you are completely introvert I have seen many such people but once माने successful हे गले सर्विस भीतर चली गले
ଏବେ ତ ତାଙ୍କୁ ପବ୍ଲିକ ଡିଲିଂ କରିବାକୁ ପଡିବ। Now they had to change their attitude, and then from introvert, then they became extrovert. I've seen many people. Okay. ସେମାନେ ଷ୍ଟଡି ଟାଇମରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ଟ ଥିଲେ, ବଟ୍ ସର୍ଭିସ ରେ ଆସିକି ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକ୍ସଟ୍ରୋଭର୍ଟ ହେଇଗଲେ। ବିକଜ ତମକୁ ଡିଲ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା। ଏବେ ଆର୍ ୟୁ ଏବୁଲ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଏଇ ଯୋଉ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଲା, ଦିସ୍ ୱାଜ ବିକଜ ଇଟ୍ ୱାଜ ସର୍ଭିଂ ସମ୍ ନିଡ୍। ବିକଜ ସେ ରିଅଲାଇଜ କଲେ କି ସେମାନେ ଯଦି ସର୍ଭିସ ରେ ବି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ଟ ହେଇକି ରହିବେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର କାମ କିଛି ହବ ନାହିଁ। ରାଇଟ୍, ସପୋଜ ୟୁ ହାଭ୍ ବିନ୍ ପୋଷ୍ଟେଡ୍ ଆଜ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ, ତମେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ଟ, ତମେ କହିବ ନାଇଁ ମୁଁ ତ କାହାକୁ କିଛି କଥା ହେବିନି, ତମେ କହିବ ମୋର ଷ୍ଟେନୋ ହିଁ ସବୁ କାମ କରିବ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଘରେ ଶୋଇବି, ତ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ତ ଚାଲିବ ହିଁ ନାହିଁ। So you had the need कि तुमको तुम्हारा legal obligation, तुम्हारा professional duty fulfill କରିବାର ଅଛି। So for that you were forced to change your attitude. So in any case, ଯଦି suppose ଏଇ ଭଳିଆ କିଛି attitude ଥିବ, ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ଚେଞ୍ଜ କରିବା? ତାକୁ ଆମେ ଏମିତି ଚେଞ୍ଜ କରିବା କି ଆମେ ସେ attitude holder କୁ ଦେଖେଇବା କି ତୁମର old attitude ଯୋଉଟା ତୁମର existing attitude ଅଛି ନା, ସେଇଟା ତୁମର need କୁ adequately meet କରିପାରୁନି। ମେ ବି meet କରୁଛି but adequately meet କରୁନି। ଆଉ ଆମେ ଯୋଉ new attitude ଟା ତୁମକୁ adopt କରିବାକୁ କହୁଛ, it will serve you better. Okay. For example, to give you a different example, suppose one person से कौन करती से suppose तो देखी तो बहुत bus conductor, how do they behave? बहुत rudely behave करते। Now this is also a type of need function ये attitude, because ସେମାନେ realize कले कि ଆମେ ଯଦି ଏଇ job ରେ nicely deal କରିବାକୁ try କରିବା, ଲୋକ ଆମ ଉପରେ ଚଢିବେ, ତ ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ we have to be rude। ତ suppose we are trying to change their attitude, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯାଇ କହିବା କି ବାବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା attitude ଠିକ ଅଛି, ଏଥିରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି କି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ अगेन ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡା କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆପଣଙ୍କ ମେଣ୍ଟାଲ ପିସ୍ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହବ। So rather than being nice, rather you have be assertive, but assertive with politeness। ତ politely assertive ହେଲେ କଣ ହବ, ଆପଣ କହିବେ କି ନାଇଁ ଠିକ ଅଛି, ମତେ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଦରକାର, ଏତିକି ବାଟ ପାଇଁ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଦରକାର, you say it politely but you say it firmly। Okay, so politeness plus assertiveness, ଏଇ ଥ୍ରୋରେ ଆପଣ ଯଦି attitude change କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ mental peace ବି କାୟମ ରହିବ, ପ୍ଲସ ଯେତିକି ପଇସା ଆପଣ ଯାହା ଦରକାର, whatever purpose you have daily in your life, that will also be met। So now we are saying ki this change of attitude will meet your needs in a better way, it will serve you better। ଏଇଟା ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ convince କରିପାରିବା, now this rude person will also become a polite person। this is the point कि need attitude को एमती change करिए। So if you see এটা further दिया है, these are all not required, ऐसे detail दरकार नहीं, but in general need based attitudes are utilitarian, that is goal oriented, and or they are also adjustive, माने adaptive function କିଛି ଅଛି। फॉर एग्जांपल यूटिलिटेरियन मोड एग्जांपल दउथि, पब्लिक सर्विस रे एडमिनिस्ट्रेटर मानकर कोन एटीट्यूड रहया कथा, प्रो पीपल एटीट्यूड। सो दैट इज अ यूटिलिटेरियन अप्रोच। एडजस्टिव अप्रोच कोन, दिस इज आल्सो एन अकोमोडेटिव थिंग, दैट इट विल हेल्प यू टू फंक्शन बेटर। प्रो पीपल हेले तुमको काम करियारे इजी हो, रादर देन इफ यू आर एंटी पीपल, राइट। सो नीड बेस्ड एटीट्यूड्स आर ईदर यूटिलिटेरियन एंड और एडजस्टिव। Again, we are discussing कि these attitudes may have formed in the past, rewards or punishments। For example, ଆମେ ଯୋଉ କଥା ଯୋଉ rude ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଲୋକଟା attitude, ସେ କଣ ସେ କିଛି ଗୋଟେ punishment ପାଇଁ ସେଟା ହେଇଥିଲା ନା, ସେ ଆଗରୁ ମେ ବି ସେ starting ରେ ସେ nice ଥିବ, but ଲୋକମାନେ ତା ଉପରେ ଚଢିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିବେ, ତାକୁ ଖରାପ ଲାଗିଥିବ, then he changed his attitude because of some punishment। Similarly, suppose one person is very sweet, it might happen that because of some rewards given to her, she is sweet, he or she is sweet। Suppose because he realized कि sweet हवा द्वारा ମୋ କାମ ହେଇଯାଉଛି ଆସାनी से, because of some kind of rewards or punishment, these need attitudes are formed। And finally, this is the final kind of function, that is known as knowledge function। knowledge function माने कौन, ସେଇ attitude, ସେଇ type ର attitude जोटा कि हमको କିଛି ଗୋଟେ knowledge ଭଳିଆ କାମ ଦବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ knowledge ଟା normal knowledge ର point ନୁହଁ, ମାନେ normal knowledge ତମେ ଭାବିବ କି ଦିଲ୍ଲୀ ହଉଛି ଇଣ୍ଡିଆର capital, ସେଇ type ର knowledge ନୁହଁ। ଏଠି ଏଇ ସେନ୍ସରେ knowledge यूज କରାଯାଇଛି कि କିଛି ବି information, whether that may be right, that may be wrong, but some kind of information on the basis of which we function, ଆମେ daily functioning କିଛି କରିପାରିବା। So that in that sense this knowledge is used। So attitudes which provide us some kind of basis for quick decision making। quick decision making माने immediately देखो attitude ଆଉ decision making ଭିତରେ ଏଇଟା ହଉଛି relation। attitude ଆଉ decision making ଭିତରେ this is the relation। what is the relation? That if you have certain kind of knowledge based attitude, this will help you to take better decision। now how will you say that this is better?
better in the sense ki sometimes better will be in the sense of quickness, sometimes it is better in the sense that it is the right decision. So for example, when we need quick decision, there we use what is called as heuristics. Try to understand these points. Again ମୁଁ କହିଲି ଏଇ ସବୁ ଟର୍ମ ଗୁଡା ଦେଖିକି ଡରି ଯିବନି, ଏ ଟର୍ମ ଗୁଡା ବହୁତ ବେସିକ ଜିନିଷ। ଏବେ ଦେଖ heuristics ବି କଣ ତମେ ସବୁ ଜାଣିଛ, ସବୁ ୟୁଜ କରିଛ। only thing is that you might not know କି ଏଇ ଜିନିଷର ମାନେ ହଉଛି ଟର୍ମ ହଉଛି ଇଏ। heuristics ହଉଛି those mental shortcuts which help us to take quick decisions. Mental shortcuts. For example, even different kinds of prejudices, they are also certain kind of heuristics. Suppose ତମେ କହିବ କି certain community ର ଲୋକ ଏମାନେ ତ ହଉଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କଥା କହିବା କଥା ନୁହଁ, because if we talk to them it is possible that କିଛି ଗୋଟେ ଆମ ଭିତରେ conflict ହେଇଯିବ. So you might be very biased, but it is helping you to take quick decisions in the sense କି ଯଦି next time କେବେ ସେଇ community ର ଲୋକ ତମ ସାଙ୍ଗେ କାହାକୁ ତମେ ଭେଟିବ, ତୁମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହବନି. It is possible that again this kind of experience has developed because of some of your past experiences. Similarly ତମେ କହିବ କି so what is the meaning of heuristics? These are mental thumb rules or mental shortcuts जोटाको हमको क्विक डिसीजन मेकिंग रे हेल्प करे. फॉर एग्जांपल सपोज तुमको कहब कि अच्छा तुमे ट्रेन ने जीव कि गोटे जगह को ट्रैवल करिया जो, तो यू हैव ऑप्शन कि ट्रेन रे जाय परियो, फ्लाइट रे जाय परियो. सो तुम यदि मेंटल शॉर्टकट तुम माइंड रे एटा अछि कि ट्रेन इक्वल्स टू डर्टी, ताल तुम इमीडिएटली डिसीजन नै जो कि नाही मु ट्रेन रे जीवी नु फ्लाइट रे जीवी. ऑन द अदर हैंड जदि तुमरो माइंड रे मेंटल शॉर्टकट अछि कि फ्लाइट होची रिस्की, ताल तुम इमीडिएटली डिसाइड कर नाही मु ट्रेन रे जीवी, फ्लाइट रे जीवी. So do you see, our attitude will also help us to take decisions based on mental shortcuts. So this kind of attitude is serving what kind of function? This is serving our knowledge function. এই sense ରେ ଆମେ କହୁ. Now it is possible कि ଏଇ knowledge ଟା wrong ବି ହେଇଥାଇ ପାରେ. ହେଇଥାଇ ପାରେ କିଛି train ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉଟା dirty ନାହିଁ, ହେଇଥାଇ ପାରେ କିଛି flight ଏତେ ବି risky ନାହିଁ. Okay? But so it is not a matter of whether it is factually correct or not. It is in this sense it is knowledge use ହେଇଛି କି it is the basis for our decision making. Right? Similarly, there is another term कि this is also serving our cognitive economy. या माने कौन cognitive economy? Cognitive economy माने होची जोथरे हमरो cognition को कम यूज करिया पड़ियो. So you use less cognition. Cognition माने thinking. हमें कम thinking यूज करके decision नहीं परिया. Okay? Which is also similar to this point. कि think or reason less. हमें कम भाबिया संग संग decision और संगे संग नॉन लेले भी हमें बेसी न भाबी की decision नहीं परिया. Okay? Similarly, it will also help you to have consistency in the existing attitude. जो attitude अच्छी से attitude will continue. All of these will come under what kind of function? This is the knowledge function of an attitude. Now, what is the एटा को हम चेंज केमतिया करिया? Sir, can you explain once again cognitive economy? Cognitive economy माने देखो सपोज तुमको कहबा कि तुमे कौन तुम कैरियर चूज करियो. ओके, सो तुम चूज करिया जाउछ कैरियर. तुम यदि कौन करियो, तुम पाखरे ऑप्शन अछि तुम डिटेल पूरा रिसर्च करियो. डिटेल रिसर्च करी देखला कि ओके मु यदि सिविल सर्विस करबी ताले मते एती पाठ पढिया पडियो, जदि मु एमबीबीएस करबी ताले मते या करिया पडियो, जदि मु एटा. सो दिस इज वन मेथड. एथिरे बहुत कॉग्निशन स्पेंड होउछ. ओके, हाई कॉग्निशन बिकॉज़ तुम बहुत सारा थिंक करू. ऑन द अदर हैंड यू कैन आल्सो डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ सम काइंड ऑफ एटीट्यूड. एटीट्यूड बेसिस रे कोन आईएएस इक्वल्स टू बेस्ट, अदर्स आर वर्स्ट और नॉट एज गुड. ओके, तो एबे तुमे कोन तुमको किछि भाबियो पड़ला कि एबे तुमे किछि न भाबी कि यू जस्ट डिसाइडेड कि चलो मु ताले एबे सिविल सर्विस एग्जाम दे. तो एठी हमें जो कॉग्निशन टोटली स्पेंड होने और बहुत कम स्पेंड होची. So the level of thinking that you are using is less. This is known as cognitive economy. एठी इकोनॉमी सही सेंस रे यूज होची जोथरे कम खर्च होची, less is being spent. So this is how your attitude will help you to use your mind less. बतन एटा भलो कि खराब सेटा हम कहूना. हेई टाइप रे एटा खराब. In fact, cognitive economy in many cases it turns out to be disastrous. तुम यदि किछि न भाबी कि एमते डिसीजन नै कियो, you will later on you will face the consequences. It is not a prescription. It is only a description. कि many people take such kind of decisions based on their attitude. Okay. Now, a attitude को हमें केमते चेंज करिया, ए टाइप रे attitude. You have to provide the attitude holder with
बेटर वेज ऑफ डिसीजन मेकिंग बर्तमान आम ये जो लोक एमती डिसीजन नौला कि देख आईएएस हूँ बेस्ट मु तो कोटी गोटे वीडियो देखी देती है टॉपर एंट्री वीडियो ग्रैंड एंट्री वीडियो मुझे देखी सो somehow that attitude has formed आउ ता ऊपर किसी रिसर्च करिया चाहूना सो आमे कहया बाबू देख एई भलिया थिंकिंग रे तुमे जाओ नाही तुमे डिटेल जिनसटा पढ़ी बुझी कि तापर यू कैन डिसाइड बट डोंट गो विथ दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड कि आईएएस बेस्ट आउ सब जिनस करा ओके सो विल से कि फर्स्ट यू डू सम रिसर्च सो एबे हम तुमको अल्टरनेटिव वे ऑफ डिसीजन मेकिंग सिखौते हम तुमको कहू तुम डिसीजन टा एमितिया नियोनी एटीट्यूड बेस रे नियोनी तुम्हें प्रॉपर रिसर्च करके कॉग्निशन माने थिंकिंग करके डिसीजन सो यू हैव टू प्रोवाइड अल्टरनेटिव और बेटर वेज ऑफ डिसीजन मेकिंग फॉर एग्जांपल लॉजिकल रीजनिंग एबे हम तुमको लॉजिकल रीजनिंग ही देखिन ना यू कैन इवन टेल देम कि यू टेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ एल्गोरिथम फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केट रे हम इन्वेस्ट करिया तो से लोक कहबो कि अरे मु आज पूरा 10 20 30 40 करके जो कंपनी 100 पड़े से इन्वेस्ट करी ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିବା ବାବୁ ଏମିତିଆ ରିଜନିଂ କର ନାହିଁ କିମ୍ବା ତୁମ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ବେସିସ ରେ ରିଜନିଂ କର ନାହିଁ ୟୁ ଇନଭେଷ୍ଟ ୟୁ ମାନେ ଆଲଗୋରିଦମ ବେସ ରେ କିଛି ଗୋଟେ ମେସିନ ବେସ ରେ କିଛି ଗୋଟେ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ବେସ ରେ ୟୁ ଟେକ୍ ୟୋର ଡିସିଜନ ରାଇଟ ସୋ ଏଇ ୱେ ରେ वी कैन चेंज देयर एटीट्यूड अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट नल ସେମାନେ କହିବେ କି ଆମେ କାହିଁକି ଆମେ ଯଦି ଏଟା इमिडिएटली ଜିନିଷଟା ହେଇପାରୁଛି ତାହେଲେ ଆମେ କାହିଁକି ଅନ୍ୟ ୱେ ରେ ଡିସିଜନ ନବା so you will say कि अन्य वे रे डिसीजन नले that is better for you because you will arrive at the right decision right sometimes you also have to provide them counter intuitive logic counter intuitive logic माने कौन देखो counter intuitive logic and counter attitudinal knowledge या माने कौन देखो this is also a lesson for you guys by the way okay try to understand I think you will be able to better relate मते कह सपोज एबे गोटे कोचिंग सेंटर 1 अछि आ गोटे कोचिंग सेंटर 2 अछि सपोज कोचिंग सेंटर 1 इज सेइंग कि आमे तुमको गोटे कोर्स ऑफर करूछु से कोर्स रे कौन अछि सपोज से कोर्स टा अछि 10,000 hours of content and for that we are charging you 10,000 rupees another coaching center 2 is saying कि हम पाखरे 1,000 hours रो ही कंटेंट अछि for that we are also offering you 10,000 rupees you tell me which coaching center will you join if you don't know any other fact about this तुम्हें क्वालिटी ऑफ द कंटेंट ये सब जिनसे किसी जानना दिस इज द ओनली फैक्ट यू नो तुम्हें को कोचिंग सेंटर ज्वाइन करेगी टेल मी प्राइस सेम अछि आवर्स ऑफ कंटेंट कम बेसी अछि तेरे यहाँ गोटे थॉट एक्सपेरिमेंट करिया एनीवन अरे कुह किस तो फीडबैक दियो हमें ऑडिबल ସାର୍ ଟୁଟା ସାର୍ ଟୁଟା टू डा काहे ଆଜ୍ଞା तुम्हें ସାର୍ काहे अधिका पैसा देई कम काहे कंटेंट नो ସାର୍ ଯୋଉଠି କମ ସମୟରେ ଅଧିକ ନଲେଜ ଟାକୁ ଗେନ୍ କରିପାରିବା ସେଇଥିରେ ଆମକୁ ଲର୍ନିଂ ମିଳିବ ଯେ କେମିତି ଏକ୍ସାମ ରେ କମ ସମୟରେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବୁ वेरी गुड दिस इज ଆଉ एन एक्सीलेंट रीजनिंग another kind of reasoning is also that ki, is it possible practically possible for you to study for 10,000 hours even this coaching center knows कि तुम्हें 10,000 hours रो hardly 500 घंटा भी देख परियो कि नहीं that is doubt just to make their point माने तांकर एडवर्टाइजमेंट पे ସେମାନେ तुमको मैक्सिमम ସେମାନେ ह्यूज कंटेंट दे दउछन एंड तुमको लाଗୁଛି कि यार 10,000 hours को यदि 10,000 दउची त माने मु केते 1 hour को 1,000 दउची त माने मते बेसी मु गेन करूची माने कम देकी अधिका पाउची एठी यदि 1000 hour को मु 10,000 दउची तन पर आवर 100 टका अधिका दउची है ना सो इफ यू मेक दिस काइंड ऑफ मैकेनिकल डिसीजंस इट विल टर्न आउट कि एइथिरे जति अछि तुम देखि पारिबे एठी भी फाइनली मैक्सिमम तुम 1000 hours देखलो okay so my point is on the basis of this you should not make any decision I'll tell you another thing what also happened with me I also joined one test series mains test series ମୁଁ ଥରେ join କରିଥିଲି many years ago so the test series ସେମାନେ ମତେ convince କଲେ କି ଦେଖ 30 ଟା ଟେଷ୍ଟ ଅଛି 30 ଟା ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ତମେ 30,000 ଟଙ୍କା ଦବ Okay. ତାପରେ ମତେ ସେମାନେ ଦେଖେଇଲେ କି ଦେଖ ଅନ୍ୟ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ରେ କଣ ମାନେ 10 ଟା ଟେଷ୍ଟ କୁ ସେମାନେ 25,000 ଟଙ୍କା ନଉଛନ୍ତି ମତେ କହିଲେ ତାହେଲେ ଦେଖ ତୁମେ କୋଉଥିରେ ଲାଭବାନ ହଉଛ ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା 30 ଟା ଟେଷ୍ଟ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା ନେଇଯାଅ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ ଅଛି I joined this then I realized कि how many in 1 year entirely I took exactly 11 tests बहुत कष्ट रे ମୁଁ 11 ଟା टेस्ट लिखी okay year long flexible test series the point is even they know their own statistics says कि ଯେତିକି ତାଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ଅଫର କରାଯାଏ ହାର୍ଡଲି 5 to 10% ଅଫ ଦ୍ୟାଟ ମାନେ ଏଣ୍ଟାୟାର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କୁ ସେମାନେ ୟୁଟିଲିଟି କରନ୍ତି ବାକି 90% ୱେଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି ବିକଜ ଏଗେନ୍ ତମ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ଥିବ ତମେ ସେ ଟେଷ୍ଟ ଗୁଡାକୁ ନବନି ତମେ ଭାବିବ ମୁଁ ଆରାମସେ ପଢିକି
ଆଉ ଗୋଟେ ୱିକ୍ ପରେ ଦେବି ତ ଏମିତି ପୋଷ୍ଟପୋन କରି କରି ଫାଇନାଲି 1 ଇୟର ତୁମ କଟିଯିବ ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ ମେ ବି ମରି ପଡି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଟେଷ୍ଟ ଦେଇଦବ ବଟ୍ ୟୁ ୱିଲ୍ ନଟ୍ गिव a lot of tests. My point was I should not have made this kind of reasoning. I should have thought it is better to take rather 10 tests because एथिरे rather 5000 save ହେଇଯିବ if money is the only consideration. ଆମେ କ୍ୱାଲିଟି ବିଷୟରେ ଯାଉନ but this is the way they lure you in. ଏବେ ସେମାନେ ଜାଣିଛି ସେମାନେ ନିଜେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ତୁମେ 30ଟା ଟେଷ୍ଟ କେବେ ଲେଖିବ ନା ବଟ୍ ସେମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ନମ୍ବର ଅଫ ଟେଷ୍ଟ ତମକୁ ଦେଇଦେବେ ତମକୁ ଲାଗିବ କି यार ମୋର ତ ଏଟା କଗ୍ନିଟିଭ ସରି ମୋର ତ ଏଟା ଇକୋନୋମିକାଲ ଆପ୍ରୋଚ ହେଇଯାଉଛି ତ ମୁଁ ଏଟା ନେଇଛି so this is a counter intuitive logic कि it is not always ମାନେ desirable or possible कि extra content और extra ଜିନିଷ ହିଁ ଆମ ପାଇଁ good rather I will say you should be ମାନେ counter way ରେ you should think कि less amount is actually good ତୁମେ less amount ପଢ but ତାକୁ revise କର less test ଦିଅ ଭଲ ସେ test ଦିଅ okay so 10,000 hours ର study ଅପେକ୍ଷା 1,000 hours of quality study you should look for them. This is a counter intuitive logic ଆମେ ଏଇଭଳିଆ logic ଥ୍ରୋରେ also we can say କି ଦେଖ ତୁମ normal intuitive logic ଯୋଉଟା that is wrong that means ଆମର normal और counter attitudinal knowledge similar point कि तुमର ଆମର normal attitude ଯାହା ଅଛି the reality is that ତୁମେ ଯଦି ତାକୁ change କରିଦବ counter କରିଦବ then it will rather be more beneficial to you. Okay. Now there are some other kind of examples of knowledge function କେମିତି ଆମର attitude different types of attitudes are also performing knowledge function. Now let us see what are the examples. Suppose we talk of prejudices. Prejudices को हम ପରେ पढ़िया in detail. Prejudices in short means negative irrational intergroup attitude. Negative irrational intergroup attitude. ମାନେ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରୁପ ପାଇଁ ହିଁ ତୁମର ନେଗେଟିଭ ଆଉ irrational attitude ଅଛି ଯେମିତି କି ସପୋଜ there is this attitude କି ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆନ versus ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ ତ ସପୋଜ ତମେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛ କି ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ ମାନେ ବହୁତ ଖରାପ so this kind of attitude is known as prejudice କି entire group ପାଇଁ ଯୋଉ type ର ଗୋଟେ ଖରାପ attitude so there is one very this is a very well known example कि तुम जानथियो कि केरला रो बहुत सारा नर्सेस माने जाई कि बाहर कंट्रीज रे ସେମାନେ एस्टाब्लिश होछन स्पेसिफिकली इन यूएसए तो इनिशियली जतन ସେମାନେ माइग्रेट करथले अन्य कंट्री रे जाई काम करथले तो अमेरिकन जो व्हाइट डॉक्टर स्पेसिफिकली जो माने थे दे आर वेरी सस्पिशियस ऑफ देम कि यार एमाने इंडिया रो आछन एमान कोन जणाथियो बट व्हेन दे स्टार्टेड वर्किंग विथ देम दे रियलाइज्ड कि नहीं actually they are very hardworking they are very knowledgeable so their attitude gradually change so prejudice टाको हमें केमिति चेंज करि परिया through actual experience जेतला हमर actual experience will be counter to our attitude हमें attitude जहा भाबुतलु तार against हम experience आसीगला then these people ए जो attitude holder माने these are the attitude holder in this case they will change their attitude towards the attitude object एठी attitude object हले जो मलायली नर्स मान similarly talk about stereotypes stereotypes माने कोन fixed or rigid irrational categories again this is also an outcome of certain kind of attitude कि तुम्हारा stereotypes अच्छी कि नॉर्थ इंडियन आर लाइक दिस साउथ इंडियन आर लाइक दिस नॉर्थ ईस्ट इंडियंस आर लाइक दिस तो ये जो stereotype माइंड रे अच्छी कि सब नॉर्थ ईस्ट इंडियन माने हेले ए सर्टेन काइंड ऑफ पीपल कि से माने समस्त मोमो खाउछंदी तो ये जो नॉर्थ ईस्ट इंडियन माने मोमो खाउछंदी दिस इज अ stereotype हाउ विल दिस चेंज थ्रू एक्सपीरियंस इट विल चेंज तमे दिन नॉर्थ ईस्ट इंडिया गलो देखले से माने भात डाली खाउछंदी तुमर माइंड ब्लोन हे गला अरे वाओ मु तो भूल बुझतिली ताले so actual experience will also work to change their this kind of attitude. Similarly, cognitive bias ଆମେ ଗୋଟେ ଏଇ ଷ୍ଟଡିଟା ପରେ ପଢିବା ୟା ପରେ ପଢିବା ଫେଷ୍ଟିଙ୍ଗର ଏଣ୍ଡ कार्ल स्मिथ ଙ୍କର ଗୋଟେ ଷ୍ଟଡି ଅଛି cognitive dissonance ଉପରେ cognitive dissonance based attitude change. In any case, we will come to attitude change afterwards. Take 5 minutes break. 7:56 around will 7:57 around will meet. 5 minute break.
Hello, am I audible? Yes, sir. Okay. कौन डाउट अच्छे यदि पचार so far if you have any doubts. Screen दिखाऊँ मोर? Is my screen shared or not? Yes, sir. Yes, sir. Okay. कौन डाउट अच्छे एपर्यंत किसी पार्ट बुझी पारलन पढ़ियो ए सब इगो डिफेंसिव मैकेनिज्म पढ़ियो बहुत ही इंटरेस्टिंग जिंस अछि ओके सो फॉर एग्जांपल जंते रिप्रेशन टा होची कि रिप्रेस करदा अनडिजायरेबल थॉट्स फीलिंग्स को रिप्रेस करदा डिनायल होची जस्ट सिंपली तुम डिनाय करियो कि एटा तो नहीं अब बहुत सारे जिंस मु एक्चुअली आई हैव आल्सो सीन इन सम पीपल ओके फॉर एग्जांपल वन ऑफ माय फ्रेंड्स स्टिल इन सर्विस सो ही हैड फोन ओके तापर तार गोटे बहुत ही प्यारा फोन फॉर सम रीजन थिला से फोन टार एक्चुअली खराब हो से फोन आउ चार्जिंग हो नहीं पॉइंट वाज दैट हिज गर्लफ्रेंड हैड गिफ्टेड हिम दैट फोन तो से फोन टा फॉर सम रीजन चार्ज हो नहीं तो से चार्ज जतले करूची बहुत धीरे धीरे चार्ज तो आमे ताको बहुत सारा डिफरेंट चार्जर रे भी लगे देखिए चार्ज हो नहीं तो फॉर एवरी टाइम हम से कहली कि भाई चेंज कर दियो एटा तो ही वाज सेइंग कि नहीं एटा एट वन पॉइंट ही सेड कि नहीं चार्जिंग पॉइंट टा खराब अछि देन ही सेड कि चार्जर फर्स्ट कहले चार्जर खराब अछि तुमरो ही चार्जर खराब अछि तापर कहले कि हम कहले हम समस्त चार्जर खराब अछि कहला हां तापर कहले नहीं चार्जिंग पॉइंट खराब अछि तापर फाइनली आई सेड कि भाई तुम पई बोधे फैराडेस लॉ भी हम चेंज कर दो आई थिंक जो एसी रो डीसी हो जो डीसी रो एसी होची सेही सेटा भी दैट इज समथिंग रॉन्ग इन दैट थिंग आई थिंक माने पॉइंट इज ही कंप्लीटली डिनाइड कि फोन मो फोन न तो किसी गलती ही नहीं so this is one example you will see many of these ego defensive mechanisms you will see प्रोजेक्शन बहुत लोगों भितर तुम प्रोजेक्शन देखियो ସେମାନେ ନିଜେ ଯାହା ଥିବେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ସେଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବେ in the sense କି suppose they are suspicious or they lack trust they will tell the other person कि you lack trust right ସେମାନେ ଅନଏଥିକାଲ ନିଜେ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗିବ କି ଅନ୍ୟମାନେ ଅନଏଥିକାଲ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସପୋଜ ଖୁଚୁରା କାମ କିଛି କରୁଥିବେ ଚୋରି ଚୋରି କରୁଥିବେ ସେମାନେ ସମସ୍ତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସସ୍ପିସିୟସ୍ ନଜରରେ ଦେଖିବେ that is an example of projection so you project your own feelings and desires to others ସେମିତି ଦେଖିବ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କଣ କି ସପୋଜ ଗୋଟେ ଲୋକ ତାର ଅଫିସ ରେ ଯାଇକି ଗାଳି ଖାଇକି ଅଫିସ ରେ ବହୁତ ବସ୍ ଟୁ ଗାଳି ଖାଇକି ଆସିଛି so he will displace that frustration on his ମାନେ ତାର ଅନ୍ୟ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍बर ଘରକୁ ଆସିଲେ ତା ୱାଇଫ କୁ ଗାଳି ଦବ ବିକଜ ୱାଇ ବିକଜ ସେ ଅଫିସ ରେ ସେ ବସ୍ କୁ କିଛି ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇ ପାରିଲାନି ବଟ ସେ ରାଗଟା ତା ଭିତରେ ଥିଲା so ସେଟା ତ କାହା ଉପରେ ଡିସପ୍ଲେସ କରିବ he displaced it on someone else so all of these are very interesting topics you want to read through it ego defensive mechanisms they are very very interesting okay now let's move on to the next part changing attitude and this is actually something remember ये जो entire chapter ଅଛି ना this is not just GS4 केवल नुह you can also write in essay okay you can write in society in some parts of society for example किसी society रे suppose किसी societal changes कथा पचरा हला okay suppose तुम पचरा हला कि स्वच्छ भारत मिशन को आमे केमती सक्सेसफुल करिया you write some provide some give some suggestions in those cases also you can write these way forward रे तुम एटा लिख परिबी केमती हम लोकंकर attitude change करिया remember सब बेले जो भी टॉपिक टा हमें पढ़िया तार गोटे थ्योरी पार्ट थियो तार आउ किछि गोटे प्रैक्टिकल पार्ट थियो सो दिस इज द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हाउ वी कैन अप्लाई द थ्योरी टू रियल लाइफ सो आमे यदि एटीट्यूड एते डिटेल विषय पढुछु कि एटीट्यूड कोन तो फाइनल पॉइंट होची वी शुड ट्राई टू चेंज एटीट्यूड इन अ डिजायरेबल वे किछि लोकंकर एटीट्यूड चेंज करिया निहाती दरकार तो आमे देखिए केमिति आमे चेंज कर पारे you see how this actually changes so what is our goal our goal होची कि आमे अनडिजायरेबल और anti-social attitude को change करिया towards desirable or pro-social attitude. Just to give you one example, suppose littering. Okay. Littering माने जी माने अपरिष्कार करूचंती बाहरे अळिया आवर्जना पकाउचंती तांको आमे somehow effect we can change their attitude then they समाने pro environmental attitude तांकर आमे केमती आने this is just one example okay there are different way for example criminals तांको केमती आमे normal society रे गोटे normal member करी आनि पारे सो हमको कौन करिया पड़े हमको एटीट्यूड चेंज करिया पड़े तो मु कहितली कि एटीट्यूड टा समथिंग इंटरनल डीपली हेल्ड तो एटीट्यूड बिहेवियर को तो ऊपर चेंज करियाटा इजी सपोज तुम पार्टीदंड करी जन को किछि टाइम में सप्रेस कर दलो बट जनकर एटीट्यूड टा चेंज करियाटा डिफिकल्ट एंड एटा को ही हमको चेंज करिया पड़ियो जदी हमें लॉन्ग लास्टिंग चेंज आनिया को चाहिए
So that is our goal कि हमें attitude को change करें. Now the point is why is persuasion? अच्छा, changing of attitude is known as persuasion. This is the meaning of this term, persuasion. Attitude is what they have. Persuasion is that you are able to change their attitude. मतलब mind ही change कर दो. So, but the point is why is persuasion so difficult? Persuasion is difficult because attitude are first of all these are deeply held. ଆମେ କଥା ହେଇଥିଲୁ this is deeply held. For example, you have seen in the Freud's theory there are different levels. ସେ ଏମିତି କହିଥିଲେ conscious, preconscious ଆଉ unconscious. U वाला use କରିଥିଲେ. ଅନ୍ୟ theorist ମାନେ subconscious to use କରନ୍ତି S. Conscious and subconscious. So usually many of these attitudes are in our subconscious also. So these are very deeply held. ଆମ ଭିତରେ internally ଏତେ deep ରେ ଅଛି even many of times we don't know. So that is why it is difficult to change. Second is it is persistent or enduring. हमें definition नहीं देखिଥିଲେ कि this is enduring माने this is resistant to change. एते जल्दी change हुए नहीं. And these are predispositions or tendencies. ଗୋଟେ tendency को change କରିବାଟା difficult. तुमे immediate ଗୋଟେ ଲୋକର behavior को भी even regulate କରିପାରିବ. But କାହାର tendency को change କେମିତି କରିବା? So that is much more difficult because tendency is something which comes from internally. Right? But before we go towards this, এই part টা ଆମେ जो discuss କରୁଥିଲେ कि ଜଣେ for example one person asked कि attitude ଆଉ behavior ରେ difference କଣ ଅଛି? The point is कि attitude and behavior are different and attitude influences behavior. And our final goal is कि through attitude change ଆମେ behavior को change करिया in the long term. And this change of behavior is something in a desirable way. For example, criminal को ଆମେ केमती society रे integrate कर परिया. तो जदि तार attitude change कर परिया से ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକ ହେଇଯିବ. तो तापरे ଆମେ ता उपरे continuous नजर रखिया दरकार नहीं. So that is our long term goal. But the problem here is ଏବେ ଜଣେ କହିବ କି ତୁମେ ଯଦି କହୁଛ କି attitude change କରି behavior change କରିଦବ. So then you are assuming कि attitude ଆଉ behavior ଭିତରେ ଗୋଟେ direct link ଅଛି. So who will say कि ଏଇ link ଟା ଅଛି କି ନାହିଁ and କେତେ strong ଅଛି? Okay. That is the point. What is the attitude behavior link? So only if there is a link, then we will study ki how to change the attitude. नॉले attitude change करिया फायदा कौन हो? नॉले तो आमे केवल immediate behavior change ऊपर focus करिया. For example, आमे law, rule ये सब जिनसे ऊपर focus करिया कि केमती situational और external factor through रे आमे लोगों को behavior को माने control करिया. Rather than कि internal factor through रे control करिया. So for that reason, we are trying to understand ki why should we study attitude anyway. The argument here is कि there is an assumption कि attitude which are relatively fixed, and there is a direct link between behavior. And if we can understand attitude, then we can understand behavior. And if we understand behavior, then we will be able to predict that behavior. And if we are predicting that behavior, finally we will be able to control the behavior. And this is something also another thing which is known as the goals of psychology or in any case in any kind of science. If you see in many disciplines, तुम first chapter रे बहुत सारा topic रे पढ़ी दियो कि तुम्हारा goal कौन अछि? चारिटा usually goal थाए. गोटा थाए description, then there is explanation, then there is prediction, then there is control. Means suppose आमे theories of laws of motion कहीं पढ़िया. Laws of motion आमे प्रथम कौन करिया? Describe करिया कि how objects move. Then we will explain माने जेमती Newton's laws of motion that explains कि how objects move. Okay. एटा description में simply कि object को आमे देखिलु कि सामने एमती straight line ने जाउछंती. Then आमे देखिलु गोटा object आउ जो गोटा object रे बाडे गले से घुंची जाउची किछि बाटा. This is only the description. Explanation हला जे न्यूटन जेमती कहले कि माने गोटे force टा होची गोटे equal amount of reaction create करी. Okay. Action will produce same amount of reaction. Then we come to prediction. Prediction on the basis of this understanding, we are able to predict कि गोटे object जदि एतिकी velocity रे गला आ गोटे object देहरे बाडेला ताले कोन reaction हे परि. And when we are able to predict that, then we will be able to control it. Then we will be able to control, for the example, आमे सही basis रे सबु जिंस तयारी करिया, गाड़ी तयारी करिया, space launch vehicle तयारी करिया, everything. For example, think of this thing. गोटे practical example मैं तुमको कहूची. For many a time आमे जान नथले कि हम अर्थ रो वेलोसिटी केते. और इवन फॉर एग्जांपल टेक ऑफ दिस केस कि माने जो किछि प्लैनेट्स माने अछन से माने को रेट रे मूव करछन. वी डिड नॉट नो दिस. नाउ फर्स्ट वी डिस्क्राइब्ड दिस, देन वी एक्सप्लेन्ड तांको मोशन कोन. एक्सप्लेन कला पर हमें प्रेडिक्ट कर परलु
कि एई दिन एई टाइम रे से प्लैनेट एइठी थिबो. Once we are able to predict it, then we can take action. In the sense कि suppose action माने कौन? Suppose you have to find मतलब तुम photography नवार अच्छी चीज जिनसे then you will wait at this place for this object, right? So this is also the goal of attitude change. कि attitude और attitude को हम यदि understand कर पहले ताले behavior को understand कर पहले behavior को understand कर पहले ताको हम predict कर पहले and finally ताको control कर पहले. तो that means suppose we try to understand कि criminal ମାନଙ୍କର attitude କଣ ତାଙ୍କର attitude ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କ criminal mindset ବୁଝିପାରିବା ତାହେଲେ ତାଙ୍କର behavior ବୁଝିପାରିବା behavior ଯଦି ବୁଝିପାରିବା ତାହେଲେ ଆମେ predict କରିପାରିବା କି ଏଇ situation ରେ ଗୋଟେ criminal କେମିତି behave କରିବ then we will be able to control it. This is the entire goal. But then we come to this part कि okay चलो ଆମେ କହିଦେଲେ कि ଏଇଟା link ବି ଅଛି suppose we also said कि there is a link but how strong is that link ହେଇପାରେ it is possible कि attitude of ଆମେ चलो मानिगले कि attitude behavior with link ଅଛି but maybe this link is very weak in the sense कि ସେ attitude ଉପରେ ବେଶୀ depend କରୁନି ବେଶୀ depend କରୁଛି ଅନ୍ୟ factor ଉପରେ for example external factors ଉପରେ ଯଦି ବହୁତ weak ହବ ତାହେଲେ ଆମେ attitude ପଢିବା ଦରକାର ନାହିଁ so go through these studies okay ଏତେ detail ଆମେ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ I just gave you these studies but you see कि usually most of the studies say कि attitude behavior ଭିତରେ link ଅଛି and that link is relatively strong not very strong but relatively strong and again that strength comes from different factors also बहुत सारा factor ऊपर depend करे से जिनसे कौन for example suppose କିଛି ଗୋଟେ attitude ଟା ତମର survival को impact କରୁଛି ତାହେଲେ ତ ସେ attitude ଟା ବହୁତ ହି strong ହେଇଯିବ but suppose କିଛି ଗୋଟେ attitude ଅଛି which is not that relevant to your life ତ ସେଇ attitude ର strength ଟା ଏତେ ବେଶୀ ହବ ନାହିଁ accordingly ସେଇ attitude basis ରେ ଆମେ predict କରିପାରିବା ନାହିଁ ଏତେ accurately କି ତମର behavior କଣ ହବ so there is this link and the point is the strength will also vary but there are some these counter intuitive studies go through these studies you will be able to understand ki study ro mane kon these have said ki actually attitude और behavior भितर link टा एते strong नुहे but again these are just counter arguments okay जोड़ा सब counter argument so किछि study एमती आछि जोड़ा कहूची कि नहीं एते strong नहीं but most studies says कि actually the link is strong right? Now to come to this part कि actually से strength टा कोठु आसे so this is we are talking about attitude strength ना बहुत सारा साइकोलॉजिस्ट माने रिसर्च करके ये जिनसा पाइछंती कि चारिटा फैक्टर थ्रू रे वी आर एबल टू चारिटा फैक्टर होची एटीट्यूड बिहेवियर लिंक को डिटरमाइन करे और गवर्न करे कौन कौन फैक्टर एक्सेसिबिलिटी रेलेवेंस स्ट्रेंथ स्पेसिफिसिटी तो ता माने कौन फर्स्ट हला हम देखिया एक्सेसिबिलिटी माने से कहूची सही एटीट्यूड जोटा बहुत ही इजीली तमे एक्सेस करि परिबो दोज एटीट्यूड्स आर मोर एंड्यूरिंग माने सेटा बेसी टाइम पर्यंत लास्ट करि परिबो फॉर एग्जांपल सपोज तुम माइंड रे ये एटीट्यूड अछि कि आई लव माय कंट्री सो मे बी ड्यू टू मेनी एक्सटर्नल फैक्टर्स आल्सो बार बार तुमको रिमाइंड करा होची कि यू शुड बी पैट्रियोटिक ओके सब जुआडे जाउ छ चारिडे नेशनल एंथम गाउची फॉर सम रीजन सो दैट मींस फॉर दैट टाइम दैट एटीट्यूड इज इजीली एक्सेसिबल जेतले एटीट्यूड टा इजीली एक्सेसिबल थाए सेतबेले तुमरो एक्शन भी अकॉर्डिंगली बहुत ही प्रेडिक्टेबल हे जी ता माने होची सपोज सही टाइम रे जदी नेशनल एंथम कोठी बाजिला we can accurately predict कि तुम संगे संगे थियाई पड़ियो to pay respect but other time रे हेई पारे जते कि suppose बहुत टाइम धरि कि से सब जिंस तुम माइंड को एक्सेस तुम करि ना हो से एटीट्यूड को then suddenly कोठी गोटे नेशनल एंथम बाजिला तो it will take you some time okay to react so this is the meaning of accessibility बहुत सारा एटीट्यूड एमती थाए जोटा डीपली तुम अनकॉन्शियस माइंड रे थाए it is not easily accessible to you तो accordingly तुम बिहेवियर को भी प्रेडिक्ट करना डिफिकल्ट हो because even you don't know how you will behave right suppose your attitude towards lawyers or court so that is of certain kind suppose there is a negative attitude but एते भी strong नुहे आ एते भी prominent नुह तो तुमर सेटा अनकॉन्शियस माइंड रे अछि तुम जतले कोर्ट को जीवो भी इमीडिएटली से जिंसटा बाहरी बट आफ्टर माने किछि पूरा गोटे दिन स्पेंड कला परे इवनिंग बेल को तुमको बहुत विरक्त लागियो सताल धीरे 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 तुम रियलाइज करे कि अच्छा मे बी इट इज बिकॉज मो निज भितरे भी गोटे एटीट्यूड थिला व्हिच वाज अगेंस्ट एंटी दिस प्लेस राइट सिमिलरली रेलेवेंस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेलेवेंस now what is the relevance of the attitude to the attitude holder that means it is performing some need function जदि गोटे एटीट्यूड टा तुम नीड फंक्शन को मीट करछि एडिक्वेटली दैट मीन्स से एटीट्यूड टार रेलेवेंस तुम पे बहुत अधिक फॉर एग्जांपल सपोज हम यदि एग्जांपल देले पब्लिक सर्वेंट ना पब्लिक सर्वेंट मान पई आउटगोइंग होबा
और प्रो पीपल हवा ए एटीट्यूड टा वेरी रेलेवेंट बिकॉज प्रो पीपल न हेले तुम निज काम करियाटा डिफिकल्ट हो सो इट इज मीटिंग सम नीड फंक्शन देयरफॉर in this person this attitude will be strengthened and this will be a strong attitude in this person on the other hand गोटे यदि सपोज गोटे डेस्क वर्क किसी गोटे लोक करूची गोटे कंपनी रे कंप्यूटर आगे से बसी कोडिंग करूची फॉर दैट पर्सन प्रो पीपल हवार एटीट्यूड एते स्ट्रांग हबो नाही बिकॉज फॉर हिम इट इज नॉट दैट रेलेवेंट से दिन सारा बसी कंप्यूटर आगे कोडिंग करूची से लोकन संगे डील लोकन को डील करू नाही सिमिलरली स्ट्रेंथ इन जनरल स्ट्रेंथ एटीट्यूड रो स्ट्रेंथ केमती डिटरमाइन हबो ना डायरेक्ट एक्सपीरियंस थ्रू रे जो एटीट्यूड फॉर्म होइतो दोज विल बी स्ट्रांगर इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस थ्रू रे जोटा होइतो इट विल बी वीकर एटा तो बहुत ही ऑब्वियस कथा तुम्हें डायरेक्टली फेस करछो किछि लोकन को ऑफ सपोज सर्टेन कम्युनिटी और प्रोफेशन और सर्टेन काइंड देन सेथरु तमर जो एक्सपीरियंस हबो तुम सेटा लाइफ टाइम मन रहयो तापर से लोकन आडू तुमर एटीट्यूड भी चेंज हो जियो सपोज यू मेट ए पर्सन फ्रॉम बिहार बिहारी so suppose he deals very nicely with people तो तुमर गोटे बहुत भल राप हो गला सब कुछ बहुत भल फ्रेंडशिप हो गला नेक्स्ट टाइम तुम गोटे बिहारी को देखा तुम गोटे पॉजिटिव फीलिंग रहियो बिकॉज इट इज फॉर्म ड्यू टू डायरेक्ट एक्सपीरियंस इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस थ्रू रही कि के तुम जन तुमको कहला अरे यार बिहारी लोक तो एते भल नुहंती तो सेही एटीट्यूड रो स्ट्रेंथ का एते स्ट्रांग हबनी सो ऑन दैट बेसिस योर डिसलाइक विल नॉट बी दैट स्ट्रांग और इवन लाइकिंग विल नॉट बी दैट स्ट्रांग वेरी सिंपल थिंग डायरेक्ट एक्सपीरियंस थ्रू स्ट्रांग हो सिमिलरली स्पेसिफिसिटी जो एटीट्यूड गुडा बेसी स्पेसिफिक हम दे विल बिकम मोर बेटर प्रेडिक्टर्स ऑफ बिहेवियर माने यदि स्पेसिफिक एटीट्यूड माने सपोज तुमको बिरयानी आड़ को तुम एटीट्यूड कौन अच्छी तुमको हाईली फेवरेबल हाईली पॉजिटिव इन जनरल फूड आड़ को तुम कौन ये अच्छी ओके ओके टाइप एटीट्यूड कि हाँ चलो चलेगा फूड हाँ खाए इच्छा है खाइबी ना नहीं सेमती अच्छे तो स्पेसिफिक एटीट्यूड जोटा है ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच वी कैन प्रेडिक्ट कि सपोज सौरभ को दिया है बिरयानी सौरभ खाएगा कि नहीं वी नो कि ये सौरभ विल ईट आई एम टॉकिंग अबाउट माय ओन experience also okay I will never say no to biryani but in general other food whether Saurav will eat or not it depends more इच्छा है खाएगी ना खाएगी right? So the more specific the attitude the more better you are able to predict कि whether the person will act in a certain way or not okay then come to this part कि changing attitude through cognitive dissonance now try to understand in point यार माने कौन बाय द वे डिसोनेंस हमें आगरो भी देखिछु एई वाला किछ डायग्राम करछु कॉन्सोनेंस वर्सेस डिसोनेंस तुम देखो डिसोनेंस माने कौन डिसोनेंस होची गोटे अनकंफर्टेबल फीलिंग मेंटल डिस्कम्फर्ट और अनकंफर्टेबल और इजीनेस अनइजीनेस मेंटली तुम्हें डिस्कम्फर्ट फील करे जगह सो दैट इज नोन एज डिसोनेंस एंड कॉन्सोनेंस होची जोथरे कंफर्ट अछि और किछि प्रॉब्लम नाही सो कॉन्सोनेंस और डिसोनेंस रो फॉर एग्जांपल अदर एग्जांपल भी हे परियो एठी हमें कॉग्निटिव कॉन्सोनेंस और डिसोनेंस होता एठी कथा होना एठी नॉर्मल कॉन्सोनेंस और डिसोनेंस होता होची फॉर एग्जांपल दिस कम्स फ्रॉम कार्ल रॉजर्स थ्योरी कार्ल रॉजर्स वाज अ वेरी माने वेल नोन साइकोलॉजिस्ट ही सेड कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ सेल्फ दुईटा सेल्फ गोटे लोकर थाए गोटे थाए रियल सेल्फ गोटे थाए आइडियल सेल्फ रियल सेल्फ होची सेही एक्चुअल सेल्फ तुमरो जोटा आइडियल सेल्फ होची तुम कोठा आइडियल भावछ कि मु एमिति हबा कथा राइट सपोज यू आर वेरी लेजी काइंड ऑफ पर्सन सो दैट इज योर रियल सेल्फ बट तुम आइडियल पर्सन भावछ कि मु पूरा जिम डेली जाउथवा गोटे पिला हे जानती सो दैट इज योर आइडियल सेल्फ ना जेतले रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ भितरे ओवरलैप बहुत अधिका अछि सेतले हमर कंफर्ट रहयो सेतले कॉन्सोनेंस वी विल फेस कॉन्सोनेंस माने किछि इशू होबा ओके यू आर कंफर्टेबल माने सपोज से लेजी अछि sorry say hardworking अछि and he is going to the gym then there is consonance ideal self but से lazy अछि आ तार ideal self भी कि मोडे lazy लोक ही रहे ताहाले भी ओवरलैप हो ताहाले भी ताको किछि इशू होबन से आराम से रहयो बट डिसोनेंस केतळ हबो डिसोनेंस केतळ हबो जतले रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ भितरे देयर विल बी डिफरेंस मींस तार रियल सेल्फ होची से lazy बट आइडियल सेल्फ से डेली भावची काश मु डेली जाई परथांती जिम जाय कि एक्सरसाइज करी दिए पतला हे जान बट सी जाऊ ना डेली तेणु ता मन में एंजाइटी क्रिएट करे मेंटल डिस्कम्फर्ट फील करियो कि यार मु चाहि कि भी छाड़ा मु जाऊ नहीं जिम मे बी फॉर एनी रीजन इट माइट हैपन बट ही और शी विल फील discomfort similarly suppose your real self is that you are a dishonest person but your ideal person is honest person तो तुम्हें हबा को चाहो honest and maybe लोगों को you are publicly showing कि एटा publicly show करछो कि you are an honest person
but in your mind you know you are dishonest, you will face dissonance, mental discomfort feel up. तो मतलब बहुत प्रवचन दो तो अन्य को ऑनेस्ट विषय निजे डिसऑनेस्ट हो, at the end of the day you will not be able to sleep peacefully. So similarly consonance और dissonance जतरे cognitive level ले हिजो माने thinking basis रे level ले आसियो, that kind of dissonance will be known as cognitive dissonance. So cognitive dissonance is the perception of contradictory information and the mental toll of it. Contradictory information तो माइंड रे जेतले आसियो कि रियलिटी गोटे जिंस अछि आ तुमे शो करछ आ गोटे जिंस, सेतले तुमरो मेंटल टोल नबो माने मेंटली तुम ऊपर टैक्सिंग हबो. हम गोटे एग्जांपल थ्रो रे एटा देखिया, दिस इज एन एग्जांपल कि कॉग्निटिव डिसोनेंस कोन. सपोज यू आर तुमे स्मोक करछ, ठीक अछि. सो द स्मोकिंग टोबैको और सिगरेट रो एग्जांपल हम नी. सो यू नो दैट टोबैको कॉजेस कैंसर एंड यू आल्सो नो दैट आई स्मोक, तुमे स्मोक करछ बोले तुमे जानिछ. सो दिस विल क्रिएट कॉग्निटिव डिसोनेंस because you understand that tobacco causes cancer and I also smoke, so that means मते भी कैंसर हो. सो तुम्हें स्मोक बाध्य हो, तुम्हें एडिक्शन ही स्मोक कर, पर तुम माइंड रे एंजाइटी जो आसीओ, दैट एंजाइटी इज नोन एज कॉग्निटिव डिसोनेंस. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड कॉग्निटिव डिसोनेंस को? सेमिति एबे तुम मान को इतरे कॉग्निटिव डिसोनेंस किछि पिलांकर ऑलरेडी अछि, मैक्सिमम पिलांकर थिबो. यू वांट टू स्टडी 8 hours 10 hours whatever it is, but you are studying 6 hours. सेति पई ही तो तुमको टेंशन लागुछि ना. किछि पिला मते पर्सनली मेसेज करन कथा होनी सर पढी पानु बेस समय. सो लेट अस सी नाउ देन तार रीजन में बुझ पारलो तुम्हारो रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ रो गैप होछि से. तुम्हारो आइडियल सेल्फ होछि मु दिन को 12 घंटा पढे, तुमे एक्चुअली पढुछ 5 घंटा. सो द डिफरेंस विल क्रिएट डिसोनेंस इन योर माइंड कि आई एम नॉट एबल टू स्टडी मोर, मु काहे की पढी पारु नाही. अरे यार कोडे पळेला एटा एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड. ओके, so this is the difference. now हमें देखिए कि सपोज ए लोकर एमितिया डिसोनेंस हिच, तो व्हाट इज द ऑप्शन फॉर हिम, कौन करि परियो से लोक. सो रिजॉल्विंग डिसोनेंस कॉग्निटिव डिसोनेंस तीनटा मेन ऑप्शन से लोक पाखरे अछि. एटा होजी इधर दिस इज ए बिहेवियरल चेंज, इधर से बिहेवियर को चेंज कर दो माने स्मोकिंग करे छाड़ दो, बट दिस इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज स्मोकिंग रो एडिक्शन ऑलरेडी हिच. तो स्मोकिंग गोटे ओनली एग्जांपल, बेले बेले कोन होय एडिक्शन न होले भी सेटा हैबिट भलिया हिच. सपोज इट इज योर एटीट्यूड और तुम्हारा एटीट्यूड कौन कि तुम्हें you are rude to others. So after certain time तुम हटा behavior रे सॉरी हैबिट रे कन्वर्ट ही, तो हटा चेंज कर behavioral change टा डिफिकल्ट. तेन अदर ऑप्शन तुम कौन अछि, यू कैन आल्सो डू ट्रिवियलाइजेशन. ट्रिवियलाइज माने ट्रिवियल वर्ड रू आसी, ट्रिवियल माने यार एटा तो गोटे छोट जिंस. तो ए लोक कौन कहयो कहयो कि स्मोक करियाटा तो गोटे छोट जिंस, एते बड़ जिंस कोन. तो छोट जिंस केमतिया से कहयो कि टोबैको हेले कोन समस्त कैंसर होउची, एमतिया तो किछि गारंटी नहीं. सी हेटा ता मन निजो बुझौची कि मु तो जानी से अमुक बाबू, मु तो जानी मिश्र बाबू बहुत सिगरेट पियंती, तांको तो कहीं कैंसर है. एटा किसी बड़ कथा नु. ऑन द अदर हैंड सपोज सेटा भी से जानी कि नहीं टोबैको और कैंसर भितर लिंक वेल एस्टाब्लिश्ड अछि, ताहाले से ता पाखरे आउ कोन ऑप्शन अछि. ही कैन आल्सो डू व्हाट इज नोन एज जस्टिफिकेशन. से जस्टिफाई करियो ट्राई करियो कि आई स्मोक बिकॉज आई नीड इट टू फंक्शन इफेक्टिवली, और एनी अदर रीजन ही कैन गिव. आई हैव जस्ट गिवन वन एग्जांपल कि मु स्मोक कहीं करछि ना, स्मोक कले ही भलो पाठ पढ़ी पारी, भलो काम करि पारी. आई नीड द स्मोकिंग, मु स्मोक कले ही बेटर फंक्शन करि पारी. देयर आर आल्सो सम अदर वेज ऑफ रिड्यूसिंग डिसोनेंस. आउ कोन वे रे करि पारियो, यू कैन चेंज द बिहेवियर. चलो बिहेवियर तो हम कथा हल, एटीट्यूड भी चेंज करि पारियो. एंड दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ आवर मेन ऑब्जेक्टिव कि या थ्रू रे हम केमती एटीट्यूड चेंज करे, हम पर हेटा देखिए. बट द पर्सन कैन आल्सो प्रोवाइड पॉजिटिव सेल्फ अफर्मेशन. निजो को निजे सेल्फ अफर्मेशन से करियो कि नहीं मु तो भलो पिला, आई स्मोक बट आई एम ए गुड गाय, सो स्मोकिंग इज माय ओनली बैड हैबिट. तो ये लोकंकर केते खराब हैबिट अछि, मद पिउछन, ड्रग्स होछन, मु तो खाली स्मोकिंग करूछि, असुविधा कोन गोटे खराब हैबिट अछि, ठीक अछि. सो दिस इज आल्सो वन वे द पर्सन इज ट्राइंग टू रिड्यूस द कॉग्निटिव डिसोनेंस. एंड देयर आर फाइनली मेनी मैल एडेप्टिव कोपिंग वेज. मैल एडेप्टिव कोपिंग माने, एडेप्टिव कोपिंग माने होछि ठीक वे रे कोपिंग करिया, कोप करिया माने एडजस्ट करिया. ओके, करेक्ट वे रे एडजस्ट करियाटा होछि मैल एडेप्टिव कोपिंग. मैल माने होछि बैड. सो मैल एडेप्टिव कोपिंग माने होछि बैड वेज ऑफ एडजस्ट. सो बैड वेज ऑफ एडजस्टिंग केमति करियो कॉग्निटिव डिसोनेंस रे, अल्कोहल पीबो, ड्रग्स करियो, अब्यूजिंग अदर्स. ओके,
aggression. For example, these are also can be an example of displacement type of ego defensive mechanism I may discuss with you. All of these will be also can be how the person will adapt to the attitude. So for example, से सिगरेट पीले ताको टेंशन होची तो से कौन करे ताको डील न करे अपनी से मद ही पिया स्टार्ट करे मद पीले तो भूली जीव ना एंड एक्चुअली पॉइंट इज मेनी पीपल एक्चुअली डू दिस काइंड ऑफ स्टफ घरे बहुत प्रेशर जेतले जनका ऊपर पडियो से धीरे धीरे कौन करियो that person will resort to this kind of maladaptive coping methods. They will start drinking drugs कौन किछि से स्टार्टिंग रे कहते कि यार किछि टाइम पे मु भूली जाऊ चाहूची जिंसटा बट पर से जिंसटा एडिक्शन हो जाए so these are bad ways of adjusting maladaptive coping but these will also temporarily these can also help to reduce the cognitive dissonance only temporary case okay बेसी टाइम एटा करिवो नाही एपन किछि डाउट अछि यदि पचा ସାର୍ ଯାହାର କଗ୍ନିଟିଭ ଡିସୋନାନ୍ସ ହଉଛି ତା ମାନେ କଣ ତାର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ନାହିଁ? ନା 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 से कथा के कहला integrity not always necessary ki integrity nahi many people who don't have integrity can have dissonance but that does not mean ki jaha bhitere cognitive dissonance hochi ta bhitere integrity nahi normal जिनसर भी cognitive dissonance ହେଇ ପାରେ ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ example ଦଉଛି suppose ଭାବ ଗୋଟେ housewife ଟେ ଅଛି suppose ତାର husband ହଉଛି ବହୁତ abusive okay he is torturing the wife ତ the wife wants to tell about this to her parents but ହେଇପାରେ ତାକୁ ଆଗରୁ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ତାକୁ value ଶିଖାଇଛି ତାଙ୍କ ଘରେ कि ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ତୁମକୁ adjust କରିବାର ଅଛି ତତେ तो husband सामने because you are going to spend your life with him so now this lady will also have huge cognitive dissonance at one because at one point she understands on one hand कि her husband is abusive and जदि से abuse टाको report करता ताले मे बी से abuse टा stop ହେଇया but on the other hand she understands कि तार जो cultural value ताको दिया है जबरदस्ती कि नहीं जहाँ हेले भी तो तुमको सत्य सावित्री वाला सब जिन सहिବାକୁ पड़ियो and for that she knows कि she is suffering and this will also create dissonance discomfort in her mind कि ताको गोटे solution जଣା अछि but से solution टा खराब बोली ताको आइछि so does she not have integrity she is a very right माने upright kind of person ही पारे ethically correct ही पारे सब जिन सब because of maybe some faulty understanding there is a cognitive dissonance in this case for example I will say कि ए कल्चरल वैल्यू टा ही गोटे खराब वैल्यू ताको दिया है गोटे इनकरेक्ट वैल्यू ताको दिया है रादर एई भलिया वैल्यू पे डोमेस्टिक अब्यूजेस हम सोसाइटी रे बहुत अछि the value she should have been taught ki jete jaha le physical abuse is not accepted so then she would have if she had been given this kind of value then she would have reported this case and maybe some solution would have come but my point is are you able to understand it integrity sangre किसी लेना देना नहीं एबे इंटीग्रिटी वाला भी केस हमें फ्रेम कर परिया फॉर एग्जांपल सपोज तुमे गोटे करप्ट पर्सन ओके सो तुमको पैसा तुमे नहीं छो बट ऑन दी अदर हैंड यू आर आल्सो वेरी माने तुम टे भयालु टाइप रो लोक भी माने तुमको बहुत डर लागुची कि यार मोर मोर चाकरी चल जियो सो देयर आल्सो देयर विल बी ए कॉग्निटिव डिसोनेंस ओके तुम जानि छो व्हाट इज द राइट थिंग टू डू बट यू आल्सो नो दैट यू हैव डन द रॉन्ग थिंग and there is a conflict between these two things so there will be anxiety in your mind discomfort or anxiety integrity sangre cognitive dissonance ro direct सेमति किछ लिंक नै इंटीग्रिटी थिबा लोकन भितर भी cognitive dissonance हुए इंटीग्रिटी न थिबा लोकन भितर भी सो नॉट नेसेसरी कि ओनली इंटीग्रिटी नथिबा लोकन भितर हबो समस्त भितर हुए तुम भितर हुए मो भितर हुए समस्त भितर ओनली थिंग आमे जानिनु हम तार टेक्निकल टर्म टा कोन जानि आई विल गो इन द नोट रे तुमे डिटेल एटा पढियो मु तो समराइज करी कहूची कि माने कोन गोटे एटीट्यूड चेंज तो ए सब जिंस थ्रो अच्छा ए जिंस रो एंटायर पॉइंट कोन आमे कॉग्निटिव डिसोनेंस ए जिंस देखिलु यार एंटायर पॉइंट होची कि आमे जते सारा देखो जो मेथड्स ऑफ रिजॉल्विंग डिसोनेंस जते गोटे लोक पाखरे कॉग्निटिव डिसोनेंस हे गला से जेमिति हेले ताको रिड्यूस करे को ट्राई करे इधर थ्रू ट्रिविलाइजेशन और थ्रू जस्टिफिकेशन और थ्रू बिहेवियरल चेंज बट वन ऑफ द वेज ऑफ reducing the dissonance is also changing the attitude and एटा को हमें टारगेट करिया हमें कोन करिया कि जेमिति हेले से लोक भितर प्रथमे कॉग्निटिव डिसोनेंस क्रिएट करिया देन हमें तार एटीट्यूड चेंज करिया so this is the technique which was given by फेस्टिंगर एंड कार्ल स्मिथ सेमाने गोटे एक्सपेरिमेंट कले सेमाने कहले कि देखो हमें केमिति लोकन भितर कॉग्निटिव डिसोनेंस क्रिएट करी केमिति हमें एटीट्यूड चेंज करि परिया तो सेमाने कोन कले दुईटा ग्रुप पिला को नेले ओके ग्रुप 1 ग्रुप 2 बाहर आ गोटे ग्रुप 3 पिला छिड़ा एमान को गोटे रूम को डाकी गोटे बहुत ही बोरिंग काम करिया को देले वेरी बोरिंग टास्क ओके बोरिंग काम कर साला पर एमाने तो एमान को बोर लागुची ताको एमान बाहर को गला तांको
गोटे ग्रुप को ସେମାନେ $1 इच देले, गोटे ग्रुप को $20 देले। ମାନେ $1 को कौन बहुत ही कम टंका दियाला, $20 को अधिका टंका दिया। तापर तांको कहला कि तुम एई पैसा नहीं कि तुमको एई पैसा दियाला एज पेमेंट। कौन पाई पेमेंट ना तुम एई बाहर जो ग्रुप 3 पिला छिड़ा होइछंती तांको जाई कि तुम कहो कि टास्क टा बहुत ही इंटरेस्टिंग थिला। तमे तांको गोटे मिछ कहया पे तांको गोटे पैसाटा तुमको ब्राइबरी दिया जाइए तुम जाइए कह। नाउ द पॉइंट वाज नॉट दिस एक्सपेरिमेंट, द पॉइंट वाज दिस ସେମାନେ ଆଗରୁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଆଗରୁ ଏଇ ଗ୍ରୁପ 1 ଆଉ ଗ୍ରୁପ 2 ର ଆଟିଟ୍ୟୁଡ କୁ ଆସେସ କରିଥିଲେ ଟୁୱାର୍ଡସ ଦିस बोरिंग टास्क। तो सब दीटा को ग्रुप कहली कि यार एटा तो बहुत ही बोरिंग, सो दिस इज आल्सो एक्सपेक्टेड। एंड आफ्टर दिस एक्सपेरिमेंट, आफ्टर सम टाइम दे अगेन दे मेजर्ड or assessed what is the attitude now, and surprisingly one group had changed their attitude towards the task and another group had not changed their attitude. Now can you tell me which group do you think would have changed their attitude? ग्रुप 3 ର କଥା ହିଁ କିଛି ଉଠେ ପଡୁନି, ଗ୍ରୁପ 1 ଆଉ ଗ୍ରୁପ 2 କଥା ଚାଲିଛି। ଗ୍ରୁପ 1 କୁ $1 ଦିଆଗଲା ମିଛ କହିବା ପାଇଁ, ଗ୍ରୁପ 2 କୁ $20 ଦିଆଗଲା ମିଛ କହିବା ପାଇଁ। एंड ପରେ ତାଙ୍କୁ ଚେକ୍ କରାଗଲା କୋଉ ଗ୍ରୁପ ର ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି। कैन यू गेस कि କୋଉ ଗ୍ରୁପ ର ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥିବ ସେ ବୋରିଂ ଟାସ୍କ ପ୍ରତି? ସାର୍ $1 ବାଲାର, କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ତାର କମ କଗ୍ନିଟିଭ ଡିଜୋନାନ୍ସ ହେଇଥିବ। ତୁମେ ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିଯାଉଛ ଆଉ ଆନ୍ସର ତୁମେ ମାନେ I'm really happy by the way. You are very able to quickly grasp things. Okay. So are you able to understand ସେ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି? ଦେଖ $1 ଦେଇକି ତମେ ମିଛ କହିଲ ତ ତୁମ ଭିତରେ ହ୍ୟୁଜ କଗ୍ନିଟିଭ ଡିସୋନାନ୍ସ। ଗୋଟେ ଡଲାର ନେଇକି ମିଛ କହିଦେଲି, ଯିଏ $20 ନେଇଛି ସେ ତ ଖୁସି ହେଇଗଲା, ସେ ତ କହିଲା ଚାଲ ମିଛ ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ କହିଲି ବିକଜ ମତେ ପଇସା ମିଳିଲା। ଠିକ ଅଛି, ଇଟ ଇଜ ଏଜ ଇଫ୍ କି ଯୋଉ ଯୋଉ କଣ କୁହନ୍ତି ଜାତି ଗଲା ହେଲେ ପେଟ ପୁରିଲା ନାହିଁ। তোমার জাতি ଚାଲିଗଲା ତମ ପେଟ ପୁରିଲା ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଲା ସେଇ ୱାନ୍ ଗ୍ରୁପ ବାଲା, ସରି $1 ବାଲା ଗ୍ରୁପ। ତ ଏଇ $1 ବାଲା ଗ୍ରୁପ ଭିତରେ କଗ୍ନିଟିଭ ଡିସୋନାନ୍ସ କ୍ରିଏଟ ହେଲା କି ମୁଁ କଣ ଗୋଟେ ଡଲାର ପାଇଁ ମିଛ କଥା କହିଦେଲି। So then they were later on forced to change their attitude. ତାପରେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ବୁଝେଇଲେ କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଟଙ୍କାଟେ ପାଇଁ ମାନେ ମିଛ କହିନି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ସତରେ ମତେ ଟାସ୍କ ଟା ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଏ ସବୁ ଗ୍ରୁପ ର ପିଲାମାନେ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଚେକ୍ କରାଗଲା, ସେମାନେ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ତମେ କୁହ ସେ ଟାସ୍କ ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବୋରିଂ ଥିଲା ନା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଧୀରେ ଧୀରେ କହିଲେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ତ ପ୍ରଥମେ ବୋରିଂ ଲାଗୁଥିଲା, ବଟ୍ ପରେ ଆମେ ତ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଆମକୁ ଲାଗିଲା କି ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଥିଲା। ତ ତାର ରିଜନ ବି ରିସର୍ଚର ମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ କି ସେ ପିଲାମାନେ ଭାବିଲେ କି ଆମେ କଣ ଗୋଟେ ଡଲାର ପାଇଁ କେବେ ମିଛ କହିଥିବୁ, ସୋ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ଜିନିଷଟା ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ବୋଲି ମିଛ କହିଥିବୁ। So therefore their attitude was finally changed. But I would not have lied for only $1, so the task must have been interesting. So this thing is known as less need leads to more effect. कि हमें less reward देले, rather there will be more attitude change. And this is a counter intuitive idea. ଏଇଟା ନର୍ମାଲି କେହି ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଭାବିବା କି ଆମେ ଲୋକକୁ ତ ବେଶୀ ରିୱାର୍ଡ କଲେ ତାର ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, ବଟ୍ କଥା ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଲୋକକୁ ବେଶୀ ରିୱାର୍ଡ କରିବ ତାକୁ ଲାଗିବ କି ସେଟା ହଉଛି ତାର ସେଇ କାମ ପାଇଁ ପେମେଣ୍ଟ। ଓକେ, they will not take it as something that needs to change their heart. So here you can see for example, and এটা ବହୁତ ରିଅଲ ଲାଇଫ ରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ହେଇଛି। गिव इट अप कैंपेन କଥା ଭାବ, ଯେତେବେଳେ ଏଲପିଜି ସବସିଡି ଛାଡିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରାଗଲା। ବାଇ ଦ ୱେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ, गिव इट अप कैंपेन, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାହା ବି ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛି, ଡୋଣ୍ଟ ଥିଙ୍କ କି ଓନଲି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁରୁ ସେମାନେ କାଲକୁଲେଟ କରି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରୋଲ ଆଉଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେଟା ବହୁତ ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ସେଠି ବି ଅଛନ୍ତି ହୁ ଆର୍ ୱାର୍କିଂ କି ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ କୋଉ ୱେରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଲେ ଦେ ୱିଲ୍ ମୋର ଆକ୍ସେପ୍ଟ। So give it up campaign in general, if you don't know, एलपीजी सिलिंडर रे आगରୁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବସିଡି ମିଳୁଥିଲା। ତ ବହୁତ ଲୋକ ଯୋଉ ଅନଡିଜର୍ଭିଂ ଲୋକ ବି ସେମାନେ କରି ନେଇଥିଲେ ନିଜ ନିଜ ନାଁରେ ସବସିଡାଇଜ ଏଲପିଜି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହିଲା କି ଯୋଉମାନେ ଅନଡିଜର୍ଭିଂ ଅଛ ତୁମମାନେ ଭଲେଣ୍ଟାରିଲି ତା ଛାଡିଦିଅ। କାହିଁକି ଛାଡିଦିଅ? ବିକଜ ଫର ଦ କଣ୍ଟ୍ରି, ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ଅପସନ 2, ଫର ଦ କଣ୍ଟ୍ରି ତୁମେ ଏଟା ଗିଭ୍ ଅପ୍ କରିଦିଅ। ସୋ ୟୁ ଆର୍ ମେକିଂ ଏ ହ୍ୟୁଜ ସାକ୍ରିଫାଇସ ଫର ଦ କଣ୍ଟ୍ରି। ଅପସନ 1 ତାଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ଥିଲା? ସେମାନେ କହିଥାନ୍ତି କି ବାବୁ ତୁମେ ଛାଡିଦିଅ, ବିକଜ ତୁମେ ଛାଡିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତୁମକୁ ଅନ୍ୟ ଆଉ କିଛି ମନିଟାରୀ ଆୱାର୍ଡ ଦବ। ତ ଏଇଟା କହିଥିଲେ ରାଦର ଏଇ ଜିନିଷଟା ଇଫେକ୍ଟିଭ ହେଇନଥାନ୍ତା। And actually, if you see, Give It Up campaign is a successful campaign. बहुत लोग माने crores of people actually stopped availing subsidy. And ତା ଦ୍ୱାରା ଆମର କଣ ଫାଲତୁରେ ଯୋଉ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଥିଲା ଏଟା ବଞ୍ଚିଗଲା। ବଟ୍ ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ମନିଟାରୀ ଟର୍ମରେ କହିଥାନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାକୁ ଲାଇଟଲି ନେଇଥାନ୍ତେ, and ମାନେ ସେଟା ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇନଥାନ୍ତା। ଇଭେନ ଇଫ୍ ୟୁଆର ବିହେଭିୟର ସର୍ଟ ଟର୍ମ ପାଇଁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇନଥାନ୍ତା। ସୋ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଲେସ୍ ରିୱାର୍ଡ ଦେଲୁ, ବଟ୍ ଦ୍ୟାଟ ଲେଡ୍ ଟୁ ମୋର ଇଫେକ୍ଟ। ଦିସ୍ ଇଜ ନୋନ୍ ଆଜ less leads to more effect. I have given you one of my examples. For some time ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଥରେ ମିଲେଟ୍ ବିଷୟରେ ବହୁତ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲି, I participated in one quiz
तो से क्विज रे स्टार्टिंग लिखा थी यू विल गेट अ रिवार्ड, कहली कौन रिवार्ड, चलो देखिया खेलिया। I started doing this. Then I finally found out कि रिवार्ड थिला फाइनली गोटे सर्टिफिकेट गोटे एमती इमेज टा डाउनलोड हेगला, यूजर नेम जहा थिला सेथिरे डाउनलोड हेगला कि यू हैव सक्सेसफुली पार्टिसिपेटेड इन दिस श्री अन्न क्विज। दिस हैपेंड विथ मी पर्सनली, आई एम टेलिंग। देन आफ्टर सम टाइम मु निजे जेतले भाबिली बहुत सारा जगह रे मिलेट मिलेट विषय देखिली, निजे भाबिली कि हां मिलेट टा बहुत भलो जिंस, आई थिंक वी शुड ट्राई इट, एंड इट इज आल्सो फैक्चुअली आल्सो करेक्ट। But later on also again I realized कि why is this attitude of mine changed, because ମୁଁ ଯୋଉ ଏତେ ଟାଇମ ୱେଷ୍ଟ କରିକି ପରେ ଚलो ଟାଇମ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିକି ଗୋଟେ କ୍ୱିଜ ଖେଳିଥିଲି, ଲାଷ୍ଟରେ ମତେ ବହୁତ ହି କମ ରିୱାର୍ଡ ମିଳିଲା। ତ ପରେ ମୁଁ ନିଜକୁ କନଭିନ୍ସ କରିଦେଲି କି ନାଇଁ ମତେ ମେ ବି ଆକ୍ଚୁଆଲି I actually like millets. I must have really loved millets. I'm deleting this from the PDF. It's a bit embarrassing, but now you will be able to understand ki what is the meaning of attitude change. This part will be there if you want to remember this part. Now come to this part, there are other techniques of attitude change also. Other techniques कौन अच्छी? You can provide people with information or evidence. These are all direct techniques, okay? By the way, these are all direct techniques. ଆମେ directly ଲୋକଙ୍କର attitude change ଉପରେ କାମ କରୁଛେ। For example, by giving them information or evidence. ଯେମିତି କି HIV ଉପରେ ଆଗରୁ ଏଟା ଗୋଟେ ଟାବୁ ଥିଲା, because ଲୋକମାନେ ଭାବୁଥିଲେ କି ଟଚ୍ ଥ୍ରୋ ରେ ବି ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ୍ କରେ। ସୋ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇନଫର୍ମେସନ ଦେଲୁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ attitude ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ଚେଞ୍ଜ ହବ। तो इनिशियली ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ମିସକନସେପସନ ଥିଲା କି HIV ଟା ଟଚ୍ ଥ୍ରୋ ରେ ବି ସ୍ପ୍ରେଡ ହଉଛି, ତ ତାଙ୍କର ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ଟୁୱାର୍ଡସ HIV ଇନଫେକ୍ଟେଡ ପିପଲ ୱାଜ ଅଲସୋ ଭେରି ନେଗେଟିଭ ହେଲା। ତ ସେଟାକୁ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କେମିତି କଲୁ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ କରେକ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ ଦେଲୁ କି HIV ଇଜ ନଟ୍ କଣ୍ଟାଜିୟସ୍, ସୋ ଦେନ୍ देयर ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ସ୍ଲୋଲି ଚେଞ୍ଜ। सिमिलरली थिंक ऑफ कोविड-19, जो वैक्सीनेशन, मास्क, पीपीई किट यूज करिया, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब जिनस इनफॉरमेशन और एविडेंस थ्रू रे तांको आमे लोकन कन्विंस कलु ना कि यदि आमे मास्क पिंदिबु, यदि आमे सोशल डिस्टेंसिंग करिवु, ताहले हमर चांस माने कोविड हवार चांसेस लेस है। सिमिलरली मास अवेयरनेस कैंपेन्स, दीज आर ऑल डायरेक्ट टेक्निक्स कि आमे लोगों को एटीट्यूड करिया, एटीट्यूड चेंज करिया, ताको इन्फॉर्मेशन और एविडेंस दे। सिमिलरली देयर इज अनदर टेक्निक कॉल्ड कंडीशनिंग। कंडीशनिंग कौन? कंडीशनिंग माने होची रिपीटेड पेयरिंग ऑफ टू स्टिमुली। वेरी सिंपली यार सिंपल माने होची दुईटा जिंस को सांगरे पेयर करिया बहुत दिन पर्यंत रिपीटेडली जति, ताहले आमे कोन गोटे ता भितरु जिंस आसले हमको अन्य जिंस कथाटा मने पड़ी। फॉर एग्जांपल जो मझे देखते जब कोविड टाइम रे तुम जहाँ को भी फोन करियो से 5 मिनट प्रथम मुंडा खराब करथिला। अमिताभ बच्चन वाज टेलिंग अस कि कोविड 2 गज दूरी बहुत है जरूरी, समथिंग लाइक दैट। मने अछि कि नहीं? बाय गॉड गोटे 2 मिनिट पूरा कंटिन्यूअसली चलतला से मेसेज, कार मने अछि कि नहीं? ହଁ Anyone? ସାର୍ Yes, sir. Yes, sir. ଆସିବେ। ଏଟା ବହୁତ ଚିଡ ଲାଗୁନଥିଲା? ତ କାହାକୁ ଫୋନ करे तो जहाँ को भी फोन करियो गोटे 2 मिनिट कंटिन्यूअसली आगो अमिताभ बच्चन तुमको ज्ञान देवे कि बाबू तुम कोविड कोविड रे एमती डिस्टेंस मेंटेन कर। बट व्हाट वाज द पॉइंट? ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉइंट वाज द कंडीशनिंग। तो जेतेବେଳେ आमे तो दिन रे बहुत थर कॉल करू, तो सब थर जेतेବେଳେ पेयरिंग होची कॉल माने किछि गोटे कॉल संगरे तुमरो एई इन्फॉर्मेशन और मेसेज ता सेतेବେଳେ मेसेज ता स्लोली इंटरनलाइज हेजी। आ जेतेବେଳେ तुम कॉल करियो तुम एई मेसेज कथाटा मने पड़ियो। This is due to very simple repeated pairing. এটা আমার this is by the way this is what is known as classical condition. This was an experiment done by Ivan Pavlov. सब बेसी थियोरेटिकली हम जीवा दरकार नहीं। मे भी किसी लोग तुम भीतर किसी जानी थियो तार स्टोरीटा हे जो जो कुकुर जो सलाइवेट करतला ताको मीट आउ बेल बजा होतला जेतबे। So that is also a very interesting story. Classical conditioning research करी देखियो टिक गूगल करी if you don't know. This is the same principle. Okay? रिपीटेड कंडीशनिंग। तो या थ्रू रे कोन हम लोगन को एटीट्यूड चेंज कर दवा। तो बार बार जदी जणो तुम कहे कि नहीं तो मास्क पिंदो ये करो डेली दिन राती तुम अमिताभ बच्चन एडवाइस दो, फाइनली तुम मतलब घर बाहर तुम कहो तो ठीक अच्छे तुम घर नहीं कहो मते दे दियो मास्क टे पिंधी जाउछ। सो दिस इज द चेंज इन एटीट्यूड। वन ऑफ द सब टाइप्स ऑफ कंडीशनिंग इज व्हाट इज नोन एज mere exposure effect. Robert Jazong बोली, there was one psychologist, he discovered this thing, mere exposure कि only seeing something many a times, by only seeing something many a times we develop a likeness to that object. माने किसी गोटे जिनस तुम बार बार देखियो ता आडकू likeness आसछि। now when I give you an example you will be better able to understand. ना देखो ये एडवर्टाइजमेंट देखो, यही वाला बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट देखि दियो, ठीक है।
स्लाइस रो एडवर्टाइजमेंट होची कैटरीना कैफ तो मैंगो डॉग खाउछन. Now you tell me what is the point of sliced mango sangare Katrina Kaif? I don't think, maybe it is possible she never had a mango before in her life before doing this advertisement. But how is this affecting us? The point is कि advertisers माने जानी चाहती कि लोक माने कैटरीना कैफ को लाइक करन. तांकर दरकार अछि स्लाइस तांकर ड्रिंक को बिक्री करिया. तो ସେମାନେ बार बार जो रिपीटेड पेयरिंग करिवे with the actress plus their product. So likeness प्रथमे या ପାଇଁ जोडा अछि that will get transferred to likeness for this product. And this will come through repeated exposure. Many times exposure माने बार बार तुम टीवी रे टाକୁ देखियो दे exposure आसी. ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ହି simple ଆଉ ଗୋଟେ example ଦଉଛି. If you don't believe this, ଏବେ ଭାବ ସେ IPL time ରେ ଗୋଟେ annoying sound ହୁଏନି ନା, ପେ 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 ମଝିରେ ବାଜେ. ଇନିସିଆଲି ମତେ ସେ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଥିଲା, ବଟ୍ ମୁଁ କିଛି କିଛି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଲା ପରେ ମାନେ ଦେଖିଲା ପରେ ସରି ଦେନ୍ ଯେତେବେଳେ ସେ ବାଜିଲା started to enjoy that. Have you realized this or not? There are many songs also. Initially तुमको जमा ଭଲ ଲାଗିବନି, एते थर तुमको से सोसाइटी रे सुनिया को मिले कि फाइनली तुम भी खोजी सर्च करी से गीत डाउनलोड करी सुनी. What is this effect? This is also conditioning ପାଇଁ ହେଲା and mere exposure effect. बार बार से जिनिस को देखिया द्वारा और एक्सपीरियंस करिया द्वारा. And one another example of this is a, a phenomenon known as girl next door effect. गर्ल नेक्स्ट डोर इफेक्ट माने गर्ल नेक्स्ट डोर जेमते बॉय नेक्स्ट डोर इफेक्ट भी अछि तार ऑपोजिट. तपने गोटे झियो को तुम घर साइड झियो को जहा को तुम बार बार देखुतो, it is very likely that you will get attracted to that person, that girl. Psychologically proved. Okay. That is evidence. Proximity principle. बार बार जण को देखियो दे तांको लाइकनेस आसीबा डेवलप करियो. So this is also an मान तुम ପାଇଁ ଗୋଟେ सबक भी तुमरो सिलेक्शन हला परे तुमे जदी जाई सेठी काहा को पसंद कला एकेडमी रे, so you should ask yourself whether it is due to true love or whether this is due to mere exposure effect. तो रॉबर्ट जैजोंग कथा यदि मन पड़ो ताले तुम जानिबो कि नहीं एटा तो mere exposure effect. So maybe let us take it slowly. Similarly, rewards and punishments, carrot and stick method, very simple thing. Reward and punishment दे कि तुमे आमे तांकर attitude भी change कर परिया. Okay, I have given an example and सेथरे भी मन रखियो कि less leads to more effect. कि रिवार्ड और पनिशमेंट रे भी स्पेसिफिकली माने रिवार्ड कथा को पनिशमेंट कथा रिवार्ड रे एतला हमें लेस रिवार्ड दवा सेतला मोर इफेक्ट प्रोड्यूस करे. सो फॉर एग्जांपल टैक्स इवेजन कथा भाव. सो टैक्स इवेजन को हमें केमिति करे. सो इनिशियली मे बी जनकर एटीट्यूड थियो टुवर्ड्स टैक्स कि मु तो भाई टैक्स भरी भी नहीं, तो ताको हमें कैरट भी दवा और स्टिक भी दवा. कैरट कोन ता कहे कि बाबू तुम वॉलंटरली डिक्लेयर कर दो यदि लो रेट ऑफ फाइन तुमको अलाउ कराओ. इनफैक्ट आई थिंक गोटे सेमती टैक्स एमनेस्टी स्कीम आसला जो गवर्नमेंट कहला कि तुम्हें एतिकी टाइम भितर यदि पेमेंट किसी करिनो टैक्स इवेड करछ यदि गोटे सर्टेन डेडलाइन भितर दबो ताहले ओनली 40% ऑफ योर डिक्लेयर्ड इनकम विल बी टैक्स. जदि न दबो ताहले तुमर एंटायर 100% प्लस जेल एटा मिली. सो दिस इज द स्टिक. आईटी रेड हबो, लिटिगेशन केस हबो, तुमको हमें जेल पठे दो. सो बोथ कैरट एंड स्टिक जतले दिया हबो सेतबेले attitude will also change. Now in this case how will the attitude change? Initially the attitude will be I don't want to pay taxes. Later on that later on attitude होगा कि now I love to pay taxes. Attitude होगा कि I have to pay tax even if I don't want to. Okay. This is also a type of attitude. मते जहाँ ले भी पे करियो पड़ियो. So for this kind of एमिति के होगा कि जे टैक्स पे करनो तो सीता खुशी खुशी रे तापर दबो, बट ताको हम तारो एटीट्यूड हमें एटलीस्ट ए वे रे चेंज करिया कि he or she understands कि यदि एबे से दबो नहीं टैक्स then he or she will be the sufferer, right? Now come to this part, social learning. Social learning कौन? Now this is a theory given by बंदूरा, अल्बर्ट बंदूरा. से कहले कि आमे बहुत बड़े बिहेवियर एज वेल एज एटीट्यूड कोठो लर्न करू बाय ऑब्जर्विंग अदर्स. अन्य को ऑब्जर्व करके लर्न करू. So that is why it is called social learning. माने socially it is learned. आमे सोसाइटी को देखि कि सेठू सिखू. So आमे कौन लर्न करू ना to seeing others behave similarly and get either punished or rewarded. माने सपोज आमे अन्य काहा को देखिलु कि ସେମାନେ certain way रे बिहेव करछंती and suppose by behaving in that way they are getting either rewarded or getting punished. Accordingly our behavior or attitude भी change हे जिवो. And this is also known as vicarious reinforcement. Don't need to remember these terms, but you need to understand the concept. Concept कौन? सपोज तमे देखिलो कि गोटे एमती टर्म अछि कि बेरी माडरे कोलथ चपा, राइट?
ଯେତେବେଳେ ବିରି ଉପରେ ମାଡ଼ ହବ କୋଳଥ ତାକୁ ଦେଖିକି ଚୋପା ହେଇଯିବ, ଇନ ଦ ସେନ୍ସ କି କୋଳଥ ଉପରେ ମାଡ଼ ବି ହେଇନି, ବଟ୍ ହି ଇଜ ଗେଟିଂ ସ୍କେର୍ଡ କି ୟା ଉପରେ ଯୋଉ ମାଡ଼ ହଉଛି ମୋ ଉପରେ ବି ସେଟା ହେଇଯାଇ ପାରିବ। ସୋ ନାଉ ଦେयर ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ଆଣ୍ଡ ବିହେଭିयर ୱିଲ୍ ଚେଞ୍ଜ। ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ କି ସେ ଶାନ୍ତ ହେଇଯିବ, ସେ ପୁରା ଓବିଡିଏଣ୍ଟ ହେଇଯିବ, ରାଇଟ। ବିହେଭିयर ବି ଦେନ୍ ଆକର୍डिଂଲି ଚେଞ୍ଜ କି ଦ ପର୍ସନ ୱିଲ୍ ବିକମ୍ ମାନେ ଭେରି ଓବିଡିଏଣ୍ଟ, ରାଇଟ। ବିହେଭିयर ବି ଓବିଡିଏଣ୍ଟ ହେଇଯିବ। ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ ଅଲସो ଏନ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଅଫ ମଡେଲିଂ, ଯୋଉଥିରେ ଜଣଙ୍କୁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଉଥିଲା ସେଟା ଦେଖିକି ତାର ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ଆଣ୍ଡ ବିହେଭିयर ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ସିମିଲାରଲି ଜଣେ ଯଦି ରିୱାର୍ଡେଡ ହଉଛି ତାକୁ ଦେଖିକି ବି ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ଚେଞ୍ଜ ହବ। ତୁମେ ଦେଖୁଛ କି ଆଜିକାଲି ଆମ ସୋସାଇଟିରେ ଆକ୍ଟର୍ସ ଆକ୍ଟ୍ରେସେସ୍ ଏମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ରିୱାର୍ଡ ମିଳୁଛି, ମାନେ ଦେ ଆର୍ ଗେଟିଂ ମନି ଫେମ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। So in that way they can also inspire some people कि हमें भी तांको भली। On the other hand, someone else would also see कि IS grand entry video देखी से भी inspired हुई। You are seeing someone else getting rewarded and through that you are learning behavior and attitude. This is social learning। माने social learning को माने इटा को कहते। एगुड़ा सब phases रे हुए attention, retention, motor production, motivation, no need to go into detail। I'll tell you a very interesting experiment कि केमिति एमती आमे केमिति behavior and attitude को acquire करू। This is a very well known experiment known as Albert Bandura's Bobo doll experiment। Bobo doll होची से एई वाला doll गोटे देखि दियो जहार तळे एठी गोटे weight थाए, एटाको तमे जते पुश कर देले से पुनी बैक आसे, एमति 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 हेकी बैक आसे, देखछो कि नै एई वाला doll एठी जो अछि, दिस इज द Bobo doll, राइट। ताको तमे ठेली देले से पुनी आउथरे छिडा हे जो। सो एई एक्सपेरिमेंट रे कोन करा हला, बंदुरा कहली कि चलो देखिया कि आमे छोट पिला माने वायलेंस को अन्य को देखिके वायलेंस शिखुचंती कि नै। सो प्रथम से कोन कले गोटे ग्रुप एमती किछि चिल्ड्रन को नेले, सेमान को गोटे टीवी रे देखा हला, गोटे प्रोग्राम देखा हला। से प्रोग्राम रे कोन हला, किछि लोक आसी कि ए बोबो डॉल को बाडौतले, ओके बाडौतले एंड तापरे माने खुशी खुशी रे पळौतले, किछि तांको किछि इंपैक्ट तावर पड़नथला। तो दे वर लिविंग हैप्पीली। तो ए लोक माने जो बोबो डॉल को बहुत डिफरेंट डिफरेंट वे रे बाडेले। फॉर एग्जांपल जणा होची हैमर रे ताको बाडेला, जणे ताको किक मारला, जणे ताको मुक्का मारला। तो एटा सब माने देखले छोट पिला माने। तापरे कोन हला, सेई छोट पिला जो रूम रे थिले तांको रूम रे गोटे बोबो डॉल रखा हला। देन ए रिसर्चर माने बाहर जाई कि कैमरा थ्रू देखली पिला ने कोन करछन, एंड यू कैन सी कि दे वर डूइंग दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी। से माने भी एग्जैक्टली से सेम काम कले जोटा टीवी रे देखिथिले। सो बंदुरा कहले कि छोट पिला माने भी एग्रेसिव बिहेवियर को भी लर्न करंती ऑब्जर्वेशन थ्रू रे, ओके। हियर आल्सो वी आर कॉलिंग इन देम एज मॉडल। एथिरे हमें पॉजिटिव नेगेटिव वे रे यूज करनु मॉडल इन द सेंस कि एमितिया गोटे लोक और ऑब्जेक्ट और इवेंट जहा देखि कि हमें किसी गोटे जिंस सिखुछु, ओके। सो इंपैक्ट ऑफ मॉडल्स, मॉडल माने हमको बहुत इंपैक्ट करन, राइट। एंड इफ यू कैन सी कि यार एप्लीकेशन कोन, ए सब जिंस रे देखो केते साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल अप्लाई कराइ छै। स्वच्छ भारत मिशन ने गवर्नमेंट पुट इन द इमेजेस ऑफ गांधी जी इनिशियली, बिकॉज लोक माने गांधी को एसोसिएट करंती विथ गुडनेस, राइट। सो फॉर देम इनिशियली गांधी वाज द मॉडल। Later on, the Prime Minister himself, with other ministers, he also started cleaning the streets. The point is कि से public से निजो को गोटा model वाले show कला। The point was again through social learning, it is or sometimes also known as observational learning. Through observational learning or social learning, we are able to change our attitude. So we expect कि by seeing the Prime Minister or other political leaders, even actor actresses, सेमान को आना वाला, different celebrity मान को आना वाला, sports person मान को आना वाला। पॉइंट है कि लोक माने तांको देखि इंस्पायर्ड होंतु, माने समाने देखंतु कि यदि इफ दे कैन बिकम आवर मॉडल, सो वी शुड आल्सो कीप द स्ट्रीट्स क्लीन, राइट। क्लीनलीनेस बिहेवियर और एटीट्यूड को चेंज करिए। नाउ दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ आवर क्लास, सोशल इन्फ्लुएंस। आफ्टर दैट इट विल बी ओवर। सो सोशल इन्फ्लुएंस होची चेंजिंग एटीट्यूड्स एन मास। एन मास माने कोन, एन मास होची मास बेसिस रे, माने एका संगरे इन ग्रुप आम लोक आटीट्यूड चेंज करे, तो सेटा को आज सोशल इन्फ्लुएंस। तो सोशल इन्फ्लुएंस यार ऑफिशियल डेफिनेशन देखि दो। तो केमिति हमें मास रे चेंज कर परिया। फॉर एग्जांपल वन टेक्निक इज थ्रू ओबीडियंस। ओबीडियंस होची किछ गोटे अथॉरिटी फिगर रो कथा रे तमे चेंज करबा एटीट्यूड। से अथॉरिटी फिगर किए ही पारे, पेरेंट्स ही पारंती, टीचर्स ही पारंती, पॉलिटिकल लीडर्स ही पारंती, गवर्नमेंट इटसेल्फ इज द बिगेस्ट अथॉरिटी। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस लॉज बाहर कले वी आर बाउंड टू ओबे इट। दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ social influence. For example, COVID induced lockdown. This is also an example, right? There is one technique called conformity. Conformity माने होची social norms or group norms
को कन्फर्म करिया माने ताको ही फॉलो करिया आमे यदि गोटे सोसाइटी रो मेंबर और गोटे ग्रुप और कम्युनिटी रो मेंबर देन देयर इज ए काइंड ऑफ पीयर प्रेशर ऑन अस कि हमको भी सेही भला काम करिया पड़े एटा किसी अथॉरिटी फिगर ऑब्वियस अथॉरिटी फिगर किसी नथिले भी गोटे इनडायरेक्ट पीयर प्रेशर थ्रू रे वी आर हमको कन्फर्म करिया को पड़े फॉर एग्जांपल इन सेटा पॉजिटिव भी हे पारे नेगेटिव भी हे पारे फॉर एग्जांपल सपोज रेस्पेक्ट टू एल्डर्स इफ यू आर पार्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी इंडियन कल्चर देन समस्त रेस्पेक्ट टू एल्डर माने एल्डर्स को रेस्पेक्ट करते तुम देखि दियो सेटा तो यू आर आल्सो इनडायरेक्टली प्रेशराइज्ड कि तुमको भी रेस्पेक्ट होतबार अछि राइट सेमती फॉलोइंग रिलीजियस राइट्स एंड रिचुअल्स दिस इज आल्सो गोटे पेयर प्रेशर तुम मना करि परिबे का सेमती नेगेटिव नॉर्म्स क्रिएट ही स्पिटिंग थुकिबा हम सोसाइटी रे दिस इज कल्चरली एक्सेप्टेड इन मेनी एरियाज बिकॉज़ हम पान बहुत जगह दिस इज वाइडली अवेलेबल सो नेगेटिव नॉर्म्स भी किछ जेंडर बायस और इन जनरल जो पैट्रियार्कल एटीट्यूड है ना पैट्रियार्कल एटीट्यूड रो नॉर्म भी हमरो इजीली it makes us conform to that kind of actions. Now the final kind of method is what is known as appeal to emotions. Emotion को appeal करके भी हमें लोगों को attitude change कर पारे राइट ताको इमोशनल ब्लैकमेल कराबो देखो ए चाइल्ड डाइज एवरी 15 seconds from water related disease therefore help them and donate water aid को पैसा दियो कीटोर बहुत तरह ऐड देखो बार बार आस्तो सब सोशल मीडिया रे ए लोक मरि जाउची से लोक मरि जाउची तुम 5 टंका तांको एटलिस्ट दान कर दीज आर ऑल अपील टू इमोशंस नाउ एथरे किछि एडिशनल इंफॉर्मेशन अछि ठीक अछि इफ नीडेड यू गो थ्रू इट एंड दिस प्रेजुडिस पार्ट this is for your own understanding go through it many of these we have already discussed ame alport ro scale भी discuss करथिलु जो एमतिया पांचटा लेवल ले how prejudice develops prejudice होची नेगेटिव इराशनल इंटरग्रुप एटीट्यूड ओके जेमति इंडिविजुअल आडो को हमर नेगेटिव एटीट्यूड अछि सेमतिया गोटे ग्रुप आडो को जो नेगेटिव एटीट्यूड थाए ताकू कहते प्रेजुडिस फॉर एग्जांपल योर प्रेजुडिस टुवर्ड्स सर्टेन कम्युनिटी मेंबर्स योर प्रेजुडिस टुवर्ड्स साउथ इंडियंस नॉर्थ ईस्ट इंडियंस नॉर्थ इंडियंस गोटे ग्रुप पई जो प्रेजुडिस थाए वेस्टर्नर्स मानकर प्रेजुडिस टुवर्ड्स इंडियंस दैट कैन आल्सो बी माने नेगेटिव एटीट्यूड टा को प्रेजुडिस ठीक है तमरो प्रेजुडिस टुवर्ड्स वुमेन और मेन माने गोटे एंटायर ग्रुप प्रति जो नेगेटिव एटीट्यूड अछि नाउ ऑल ऑफ दीस थिंग्स यू कैन गो थ्रू इफ डाउट हला पचारियो इफ यू वांट आई कैन कंटिन्यू 10-15 minutes I can continue otherwise we'll stop मते जे प्रॉब्लम नहीं you tell me whether we should continue or not किछि पिला कंटिन्यू कले आई कंटिन्यू सर प्लीज कंटिन्यू okay ठीक अछि let's take 10 more minutes and finish this so what is the meaning of prejudice then this is the negative irrational intergroup attitude that you are having hostility or negative aggressive reaction towards an individual based on his or her membership of a particular group माने आमे इंडिविजुअल आडो को एग्रेशन आसुची बिकॉज द इंडिविजुअल इज पार्ट ऑफ सर्टेन अदर ग्रुप ओके आर यू एबल टू अंडरस्टैंड माने ता माने होची कि सपोज तुम कहयो कि ए सर्टेन कम्युनिटी मेंबर सपोज तुमरो बहुत राग अछि हिंदू मानन प्रति तो तुमे गोटा लोक जतले आसिला तुम पाखु तुम पचारलो तुमे कि दैट पर्सन सपोज सेड हिज नेम एंड यू रियलाइज कि दैट पर्सन इज हिंदू नाउ इवन बिफोर नोइंग दैट पर्सन हे पारे से लोकटा पर्सनली बहुत भलो लोक हे पारे और इन जनरल आल्सो तुमे ता प्रति काहे कि नेगेटिव एटीट्यूड रखियो but just because you learned कि that person is Hindu then for some reason maybe due to past experience or something then तुम मन रे जदी से नेगेटिव एटीट्यूड ता संग डेवलप हे गेला तापर तुम कहे बाबू तो तुम संग कथा ही हेबी तुम जाओ that kind of attitude is known as prejudice कि तुम से लोकटा विषय रे तार पर्सनल विषय रे पर्सनालिटी विषय न जानि कि भी ताको गोटे ग्रुप मेंबरशिप बेसिस रे ताको तुम जज कर दो कि ये यदि ए ग्रुप रे मेंबर ताल तो ये तो एमिति आही ये तो भलो ही नथियो so this is known as prejudice right and just like every other psychological phenomenon it is also it has three components affective behavioral cognitive एटा हमें बार बार पढ़ू A B C prejudice रो भी सेमती affective behavioral cognitive अछि if possible you think about it कि suppose गोटे anti community गोटे prejudice जनकर अछि तार affective component कोन ही करे behavioral component कोन ही करे cognitive component कोन ही करे example नेले हमें डिटेल attitude रे हमें डिस्कस करछे example देले you'll understand अल्पोर्ट स्केल ऑफ प्रेजुडिस हम डिस्कस करथि प्रेजुडिस केमती धीरे धीरे इंक्रीज करे सोसाइटी क्लास रे हम डिस्कस करथि
कि प्रथमे गोटे से ग्रुप प्रति एंटी लोकेशन माने वर्बल अटैक कराहब तांको ऊपर जोक कराहब तांको गाली दियाहब इनसल्ट कराहब तापर सपोज धीरे धीरे जिनसटा पुणी एस्केलेट कला प्रेजुडिस तापर आउ केमती इंटेंसिफाई हो तापर तुम तांको अवॉइड करियो ट्राई करियो तांको सागरे आउ किछि कथा हबन तांको कहयो कि मु त ए कम्युनिटी लोकन सागरे कथा ही होनी तांको माने यू विल बिकम सेपरेट ग्रुप देन यू विल कम टू डिस्क्रिमिनेशन डिस्क्रिमिनेशन माने तुम्हें सर्विसेस अपॉर्चुनिटी एसबु जिनस डिस्क्रिमिनेट करियो माने सपोज कहयो कि एबे आम ग्रुप लोकन पई सर्विसटा फ्री तुम ग्रुप लोकन पई फ्री नो और एल्स हम कहयो कि एई जॉब टा केवल आम ग्रुप लोकन पई तुम ग्रुप और तुम कम्युनिटी पई एटा नो देन देयर इज फिजिकल अटैक कोन तापर तांको ऊपर अटैक करे स्टार्ट हे एंड फाइनली देयर इज एक्सटर्मिनेशन माने पूरा जेनोसाइड ताकर पूरा एंटायर कम्युनिटी को मारिया को और मासाकर एंटायर कम्युनिटी को मारिया को ट्राई करियो सो आई हैड गिवन यू एन एग्जांपल आल्सो मु कहितले गोटे होटल रुवांडा बोली गोटे मूवी देखियो वेरी नाइस मूवी ने बहुत ही हार्ट टचिंग मूवी एक्चुअली रुवांडा रे जो रुवांडन मासाकर हेतला रुवांडन जेनोसाइड ता ऊपर मूवीटा सेठी भी सेमती एमती धीरे धीरे तांको सोसाइटी रे एमती स्टार्ट हला वर्बल तापर एवोइडेंस तापर डिस्क्रिमिनेशन तापर फिजिकल अटैक तापर एक्सटर्मिनेशन एटा जो हुटूस माने थिले से माने मेजॉरिटी थिले माने टुटसी कम्युनिटी आ गोटे स्मॉल कम्युनिटी थिला एमाने माइनॉरिटी रे थिले एमान को ऊपर अटैक करथि एंड ऑलमोस्ट आई थिंक 60 to 70% of the community were killed in one attack so we were also discussing कि इंडिया अबे को फेज रे अछि आई वाज आस्किंग कि धीरे धीरे हमें को फेज रे जाउछ सो देयर इज आल्सो अ डिसएग्रीमेंट कि इंडिया एग्जैक्टली को फेज रे को स्टेज रे अछि so some people are saying कि वर्बल के कहला एविडेंस के कहला डिस्क्रिमिनेशन so anyway that's a controversial topic but we are also gradually I feel personally feel कि somehow it is moving towards that thing आमे से अल्पोर्ट स्केल रे धीरे धीरे ऊपर को जाउछ now the point is how to counter prejudice को आमे केमितिया एड्रेस करे आमे एंते देखिथिले कि एटीट्यूड को केमितिया चेंज करे समझा प्रेजुडिस को आमे केमितिया चेंज करे पता कथा प्रेजुडिस इज आल्सो काइंड ऑफ एटीट्यूड तो एटीट्यूड चेंज रो जति जति टेक्निक अछि यू कैन राइट ऑल ऑफ द टेक्निक्स हियर आल्सो तो प्रेजुडिस को सेही कॉग्निटिव डिसोनेंस भी हबो say say similar points will come here also so all of those points apart from that there are certain specific techniques for changing prejudice for example there was one researcher called Muzaffar Sharif so he gave one idea कि केमिति हमें इंटर ग्रुप एटीट्यूड नेगेटिव एटीट्यूड को चेंज करिया गोटे दुईटा ग्रुप सपोज अछन तो तांको हमें गोटे कॉमन बिगर टास्क दे दे सो गोटे कॉमन बिगर टास्क दे देले तांको भीतर प्रेजुडिस टा रिड्यूस हो ए रॉबर्स केव एक्सपेरिमेंट एटा गोटे गूगल करके देखियो इट्स आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट कोन हला कि से मुजाफर शरीफ कोन कले दुटा स्कूल बॉयज स्कूल चिल्ड्रन को दुटा ग्रुप रे नेले ओके से गोटे कैंपिंग साइट को गले कैंप को सेठी से को प्रथम कोन करा गला दुटा रैंडमली दुटा ग्रुप रे डिवाइड करी तांकर गोटे ग्रुप आइडेंटिटी क्रिएट करा गला कि तमे होचो ईगल्स तमे होचो रैटलर्स ओके वन ग्रुप माने एमती सब नाम देकी कि तमे होचो बहुत जणो कहला तमे बहुत स्ट्रांग जणो कहला तमे बहुत चालाक एमते some through some way they created this group identity then semane kon kale पिला को किछि compete करिया को गेम देले जे compete करिया गेम देले सा देखली कि पिला माने बिना मतलब रे ही तांको भीतर प्रेजुडिस डेवलप हिया माने गोटे ग्रुप पिला कहले अरे एई आरो ग्रुप पिला तो बहुत बदमाश अन्य ग्रुप पिला ने कहले नहीं तुमे मान तो बहुत आमे बहुत भलो तुमे बहुत खराब ए ग्रुप कहले आमे भलो तुमे खराब देख ए सब स्कूल चिल्ड्रन बोली कथा न कथा होछि तांको थ्रो रे वी अंडरस्टूड ह्यूमन मेंटालिटी आल्सो ए सेम जिंस एडल्ट को भीतर भी हुए we are accidentally born in one country one community one caste whatever that was not under our control right but because of this accidents of birth जहाँ भी हमें जन्म ही गलु now somehow हमर तापर धीरे धीरे ग्रुप आइडेंटिटी फॉर्म हो जाए तापर हमें कोन कहू कि ए अन्य ग्रुप माने एमाने होचन बदमाश हम ग्रुप भलो अन्य माने बदमाश ए सेम प्रिंसिपल समस्त प्रकार काम करे ओके इट इज वेरी लाइकली दैट इफ most of you had been born in let us say Saudi Arabia it is very likely कि माने you would have been very devout Muslims and you would have been very माने तुम्हारा prejudice था अन्य community if सेमानकर लोक माने suppose इंडिया रे जन्म हितांते एठी आम कम्युनिटी भितर हितांते it is very likely कि सेमाने आम भळे भी हितांते माने सेमाने से हिंदू धर्म को बेटर कहउतांते अन्य धर्म को खराब कहउतांते because at the end of the day it is not about religion at all रिलीजन केबे किछ खराब जिंस कहया काहा को सिखौछि इट इज द पीपल जो माने निज निज भितर निज को डिवाइड करिकि they are thinking कि आमो ग्रुप बेटर यांको ग्रुप खराब so it is the people so से he understood कि आमे एटा केमिति ताले काउंटर करिया हम गोटा सुपर ऑर्डिनेट गोल करिया सुपर ऑर्डिनेट गोल माने गोटा कॉमन बिगर गोल
तो हाँ एई केस रे कोन कले मुजफ्फर शरीफ देन व्हाट ही डिड वाज कि जेतल देखले एमती बहुत प्रेजुडिस डेवलप होची देन व्हाट मुजफ्फर शरीफ डिड वाज कि सेमान को कहाला गोटे कॉमन टास्क दियाला कॉमन टास्क माने कहाला कि तुम जाओ गोटे से पहाड़ उपरू ए गोटे जिंस आनियो मिसी की करियो ओके एमितिया गोटे अरेंज करा गले सेमान मिसी काम करिया पड़ला सो जेतल मिसी काम कले धीरे धीरे तांकर प्रेजुडिस टा रिड्यूस हो गला सो मुजफ्फर शरीफ कहले कि इंटर ग्रुप प्रेजुडिस जो हुए ताको हमें केमते रिड्यूस करिया बाय गिविंग देम ए कॉमन बिगर गोल सेम जिनस यू कैन इवन यूज इन सर्विस सपोज यू आर पोस्टेड एज डीएम तुम अंडर रे किछि ग्रुप एम्प्लॉय माने डिवाइडेड हे किछि स्टाफ माने माने तांकर गोटे ग्रुप अछि अन्य मानकर आउट ग्रुप अछि तमे कोन कहयो तमे कहयो नुआ ओडिसा स्कीम रे समस्त काम करी बिकॉज़ दिस इज गोइंग टू टेक द स्टेट टू ए हायर लेवल सो एमिति कहि कॉमन टास्क देले कोन इट इज लाइकली दैट देयर प्रेजुडिसेस विल रिड्यूस तार गोटे आ गोटे वर्जन देले आरनसन बोली से गोटे जिक्सो क्लासरूम मेथड कहले जिक्सो क्लासरूम मेथड कोन से कहले कि से सेम जिंस आमे दुईटा ग्रुप को काम करेवा संगरे बट आमे एमिते वे रे क्लूज को डिस्ट्रीब्यूट करिया डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप रे कि समस्त एकाठी आसले ही से जिक्सो टा को सॉल्व कर पारे तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ जिक्सो पजल तो एमिते क्लासरूम रो डिफरेंट ग्रुप सपोज दिस इज ग्रुप 1 दिस इज ग्रुप 2 दिस इज ग्रुप 3 ग्रुप 4 समस्त को सेही पजल रो माने प्रॉब्लम रो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट दिया एंड तांको एकाठी काम करिया को कहा ओनली व्हेन दे रियलाइज कि अरे मो पाखरे जो जति जिंस अछि सेति रे प्रॉब्लम टा सॉल्व होनी मते यारो हेल्प भी दरकार यारो हेल्प भी दरकार यारो हेल्प भी दरकार and then they will come together and that will reduce prejudice this is also a method of reducing prejudice similarly another method is to increased intergroup contact intergroup contact माने दीटा ग्रुप हेता ते कांटेक्ट हमें रिड्यूस सॉरी इंक्रीज करिया ताले प्रेजुडिस कम जियो यार रीजन होची कि प्रेजुडिस डेवलप ही करे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कांटेक्ट एंड कम्युनिकेशन ए जिंस तुम निजे भी फील करथियो मे बी तुम रिलेशनशिप रे भी देखिथियो कि बेसी कथा नहले कहा संगरे ओके तुम गर्लफ्रेंड के बॉयफ्रेंड संगरे धीरे धीरे बेसी झगड़ा हो रादर इफ द कम्युनिकेशन चैनल इज ओपन देन देयर इज लेस फाइटिंग तो तुमरो बहुत काम अछि तो देन दैट्स अ सेपरेट मैटर बट अदरवाइज दिस इज आल्सो एन एग्जांपल राइट तो आम ग्रुप लेवल ले प्रेजुडिस हुए ताको आम केमिति एड्रेस करिया ओपन चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन चैनल को ओपन कर दियो so this will solve our mutual suspicion and doubt and this will lead to lack of no prejudice on the other hand जदि lack of contact अछि ताले prejudice हो बट एई थ्योरी रो गोटे कैवियट दिया कैवियट माने गोटे तांको वार्निंग दिया ये जो इंटर ग्रुप कांटेक्ट हमें करिया दैट शुड बी बिटवीन द ग्रुप्स ऑफ इक्वल स्टैंडिंग एमिति नहीं कि गोटे ग्रुप रो हायर स्टैंडिंग अछि आ गोटे ग्रुप रो लोअर स्टैंडिंग अछि यदि सेमिति आला ताले ए ग्रुप मेंबर माने केबे भी एडजस्ट करिवे नहीं वी हैव टू फर्स्ट एंश्योर कि दुईटा ग्रुप इक्वल स्टैंडिंग रे अछि एमिति देखिथियो सपोज बाहागर होउची दुईटा साइड रे पुओ घर साइड सपोज कि झियो घर साइड बहुत रिच अन्य साइड माने एते सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एते नहीं तो तांको भितरे प्रेजुडिस डेवलप हो तो सेताले इंटर ग्रुप कांटेक्ट हमें यदि करिया इट इज डिफिकल्ट फॉर देम टू prejudice resolve what are difficult because the standing same नहीं so first we have to ensure कि there is a equal standing and second point is कि it should be conducted in a conducive or cordial environment तो से contact गुटा सब cordial environment रे हबो नहले झगड़ा झगड़ा होतवा वाला environment रे हेले तांको भितरे भी झगड़ा हो so external effect is also important right and the final point is acculturation it is specific for cultural prejudices कल्चरल प्रेजुडिसेस माने गोटे कल्चर रो लोक अथवा अन्य कल्चर रो लोकन को जज करिया स्टार्ट करनती सेटा को होंते कल्चरल प्रेजुडिस एंड ताको हमें केमते काउंटर करिया थ्रू एक्कल्चरेशन एक्कल्चरेशन आई टोल्ड यू मतलब वन पर्सन कम्स इन कांटेक्ट विथ वन पर्सन ऑफ वन कल्चर कम्स इनटू कांटेक्ट विथ अनदर कल्चर सेतल तारो कल्चरल अंडरस्टैंडिंग ता बढ़े सो वैल्यूज आर बीइंग ट्रांसमिटेड सो इन दैट केस आल्सो ए पर्सन नो जहां बायस थियो प्रेजुडिस थियो दैट विल आल्सो रिड्यूस राइट and this phenomenon is known as acculturation society कथा रे society part रे हमें डिस्कस करले acculturation enculturation ethnocentrism ये सब टर्म हमें डिस्कस करले राइट तो मु तुम गारंटी दे कहू छे एग्जाम रे एते कथा एते भी डिटेल ले केही लिखिबे नहीं वे हैव गॉन इनटू वेरी डेप्थ 3 घंटा रे जति डेप्थ रे हमें जाइछु माने आई डोंट थिंक देयर इज लेक्सिकन ने भी जिंस नहीं को मटेरियल कोठी नहीं पॉइंट इज यूज दिस पॉइंट्स इफेक्टिवली इफ यू यूज दिस पॉइंट्स यू विल गेट गुड मार्क्स नहले अनन को भलिया जेनेरिक पॉइंट लिखियो जेनेरिक मार्क्स मिले so that is the end of the class if you have any doubts please ask by the way amaro next class रे हमें आ गोटे छोट यार टॉपिक रहिगला एप्टीट्यूड पढ़िया तापर इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़िया this will take maybe 10 to 20% of the class
and rest of the class is emotional intelligence. This is the last part of your section A. After that, from this class onwards, we'll move on to section B. Okay, that's case studies. What are the right? Upon the section A, so what section A ro application section B. Any doubts so far?